given some assignments and all those things? Is it completed? So Yes, sir. partially. ठीक है, Yes, sir. partially. सर आप जो बोले थे ना कि सॉरी, आप जो बोले थे ना कि मेंस का क्वेश्चन बनाना है, बस वही नहीं बना पाए। मेंस का क्वेश्चन नहीं बन पाया है, नहीं सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? सर क्योंकि मुझे सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, मतलब किस से बनाऊं फिर से। नहीं नहीं, एक दो लाइन का क्वेश्चन बनाना है ना बस। एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रेम, जो आपको ठीक लगे। मतलब कुछ नहीं आया तो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समथिंग लाइक दैट, इसलिए ऐसे बना सकते हैं। या फिर इसमें ओके अगर सर। हाँ पॉइंटर्स हैं तो जस्ट यू टू फ्रेम द क्वेश्चन। अभी यूपीएससी स्टैंडर्ड तो नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट धीरे धीरे फ्रेमिंग सीखना है हमें। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन, क्योंकि आंसर्स तो हर इंस्टीट्यूट में लिखाए जाते हैं, यहाँ पे हमें तैयारी करनी क्वेश्चंस बनाते कैसे। एक बार वो आइडिया लग जाएगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना आसान हो जाएगा। एंड डोंट वरी, विल डू इट ऑन अ डेली बेसिस, तो धीरे धीरे आफ्टर कपल ऑफ क्लासेस विल बी एबल टू मेक इट। ओके सर, थैंक यू सर। What about others? Have you done your homework? Yes, sir. I've completed. बस मेंस का क्वेश्चंस लिख नहीं पाई सर. अच्छा ठीक है, so submit the mains questions today as soon as possible and don't delay the assignments, है ना। उसको कुछ भी करके postpone मत करो next day के लिए. Okay, sir. It has to be done on time, right? Yeah. Okay, sir. ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है, they make sure that today they submit before the end of the day. और आज वाला जो होमवर्क मिलेगा वो भी आपका फिर एडिशनल, क्योंकि every day you'll get something and it will create a burden, है ना। And 150 points everybody wrote. Yes, sir. ठीक है, और तीन तीन चैप्टर या दो दो चैप्टर आपको याद करने थे सिलेबस। आई थिंक दैट पार्ट इज आल्सो डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो शॉर्टली विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन आल्सो, है ना। थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे उसको, बट लेट्स बिगिन आवर डे। एंड सिंस टीम हैज डिसाइडेड टू कीप द सेशन ओपन टुडे फॉर अदर यू नो friends also, so they might be joining us as well, right? Today's class is something like open to all, so we'll go in our flow, and then those people who would be willing to, they'll be part of our team. Those who would not, definitely, at least those who have enrolled, for them will continue the classes, right? Shall we take on now? यस सर। All are ready? Yes, sir. Okay, so let's move on now. And in yesterday's class, we just had a briefing about how we are going to take up the syllabus part, what are the important chapters, and how we are going to deal with them. So today we are going to continue that particular series, right? And if the screen is visible, do let me know. Is it? Yes, sir. यस सर। Perfect. So in just a quick recap, in yesterday's class, we had seen that we'll go for both the papers, paper 1 and paper 2. And our approach would be P5 plus G4. So 5 chapters from paper 1 and 4 chapters from paper 2 is what we are going to start with. Now we are starting with paper 1, and the first unit we are going to take up, or the first chapter we are going to take up, that is nothing but titled as Introduction. So I hope all of you remember the syllabus also for the introduction. Yes, sir. Yes, there are 9 units which we are going to take one by one, right? Like this, and we'll be starting with the meaning, scope, and significance. This is the first topic which we are going to take up as far as today's class is concerned. So idea is clear where our location is. Our location is, we are starting with the first subunit of chapter, correct? यस सर। Now I'm assuming all of you to be a beginner who is starting this particular course. So in the beginner, to understand the meaning, for the meaning purpose, we have two terms. One is public, other is administration, right? So first let's try to understand these two terms, right? What actually they implies, that is the meaning part. And once we understand the meaning, then preferably we'll try to get a definition out of it. So here we'll try to define. Now our definition doesn't matter a lot, because there are a lot of scholars
which are known as scholars of public administration, or they are also known as thinkers. So when we'll study the thinkers, there are roughly 25 plus thinkers which are given in our syllabus, which we'll study in chapter 2. So slowly you'll get familiar with these themes. But in general, if we talk about, there are more than 100 plus scholars who had given random definitions of both the terms, administration also and public also. Out of that 100 plus scholars, even if you remember the definition given by one person, then also you can quote that definition in exam. But for knowing that, we must have our own definition also. Suppose, we are taking reference of a particular scholar, let's say for example, Woodrow Wilson. So what Woodrow Wilson said about definition of public administration or administration and public separately, that we can club with our own definition, right? So nothing to worry, because once you understand the meaning, then you will be in a very comfortable position to define this stuff. Why it is important? It is important because the moment we are going to attempt any question, when it is going to be reflected in mains, let's say for example, we are expecting a question in mains XYZ from chapter 1 and from unit 1. So let's say we got a question, and the first question itself is what? Let's say for example, discuss, or with any keyword, discuss about the nature of public administration, right? Or there is a question that examine the scope of public administration, right? Or elucidate on significance, right, of public administration. So everywhere, whenever the question would be from the first topic, you expect that this term would come in the question. In the statement, there would be one term which is related with public administration, or there may be a word administration. So the moment I'll start writing the answer for this particular question, what my opening statement or my introduction would be. So definitely when I'll write the introduction or opening statement, I have to start with what? Let the examiner first know what is public administration. So that is the reason why we need to understand what? That is the reason why we need to understand the meaning of this particular term and the definition of this particular term, which should not be more than 2 or 3 lines. ऐसा नहीं कि हम पूरा पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ हमने we have started writing the definition and meaning only. It would be just 25 to 30 words what we have to write as far as the term public administration or its meaning or definition is concerned. So this is the only significance we have as far as understanding the meaning or the definition of the term is concerned. But to be honest, while studying, as I've told you, as we progress with the class, we'll come across 100 plus scholars or thinkers, right, which are involved in giving the definition. Why there are so many scholars, that part also I'll explain. But syllabus wise, what you have to remember, at least there are 25 administrative thinkers as per chapter 2. These things we need to remember. इन्होंने अगर कोई डेफिनेशन दिया है तो वो हमें याद रखना है, और एक बार अगर ये हमें डेफिनेशंस याद हो गए, then this will help us in forthcoming topic also, right? So I hope you got the idea. I'm telling you why it is important, what is the importance of this particular term, why we need to remember, because it may help us in writing the intro part in any of the questions which are reflecting from paper 1 chapter 1. So the question will come from chapter 1, always it will be coupled with the word public administration, and that's why it's important for us to understand. Second thing, let's say I'm assuming that there is a student A, right, who is from technical background, from engineering background, or from science background, or from history or geography background. For him or her also this term is new. In general, he or she might be knowing what is public, what is administration, but from the subject wise, he or she must understand the literal meaning or interpretation or definition of this term. So it will help him or her to take the course forward. Otherwise, it might be confusing. So I hope you got the idea that why we want to do this. Yes. Yes, sir. Why we need to understand the meaning or the definition part, right? Yes, sir. Okay. Again, I'm repeating, those students who are done with this particular thing, or they might have studied in their college or graduation or at some other places, they should take it as a revision part, right? Or they may take it as a content enrichment part. Otherwise, if you are a new, try to understand it from the
basic. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So I think most of us are in now, and we can start with the actual, discussion on the meaning, definition, and so on. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Let's proceed further, and when we talk about its meaning. So here, what we have to understand that for any term, let's say I'm starting with a term, or maybe starting with a subject called science, and all of a sudden I had started teaching you a mathematics part of it, maybe integral or calculus, right? Or differentiation, integration, and so on. Will you be able to understand? Yes or no? No, sir. Definitely. If you are not from that background, definitely not. I may have to start with very basic, maybe, I may have to start with trigonometry, or I may have to start with basic algebra or geometry, or things like that. And then only I can go ahead with such a bigger term. In our humanity subject also, what happens when we say about public administration, without understanding some of the evolutionary perspective of the discipline, right, we would not be able to understand the term properly. So what we'll do, before we can reach to the understanding of meaning and definition of the term, right, what we need to understand, we need to understand from where this particular terminology has came, that is origin part, or we can say the historical part or historical perspective. So for next couple of minutes, what I'll tell you, how the subject, or let's say the discipline of public administration came into, how this term came into. Was it there before, or it's just a recent phenomena? Once you understand that, then it would be very easy for you to understand the meaning and definition also. So whenever we talk about any evolutionary perspective, let's say if I have to study science or mathematics, and if I started from, let's say, KG, then first, then second, then third, and then up to 10th class, it would be very easy for you to understand systematically. But if I start teaching a 5th class student, a 12th class mathematics, it would be very difficult. The same thing is going to happen here also. So starting directly with the public administration is like what? Teaching a 12th class mathematics to a student who is just a beginner studying in 5th or 6th. So there would be a incongruency. There would be a conflict. So the good idea is what? Let's try to understand first the development of this particular discipline, origin of this particular discipline, right? From the three perspective, like from ancient perspective, from medieval perspective, from modern perspective, and then from contemporary perspective. And once we'll reach here, then it would be very easy for us to understand all the three things, meaning also, scope also, and significance also. Are you clear about it, how we are starting? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Perfect. So, when we talk about these two terms, public, I think most of you have heard this term before, right? And the administration also. What do you think? Which term might have came before, public or administration? Whether we got the term public first, Public. Public. public, right? Or whether we got the term administration first. This is the one question. Now, the relationship between these two terms is like chicken and egg. And if somebody asks whether chicken came first or egg came first, what would be your answer? Hmm? अभी बोलो क्या हुआ? We cannot say, sir. We cannot say, right? So Yes, sir. since we cannot say, how come we can say that administration came first or public came first? Who was there to see which came first? Right, because it might have came, let's say, 2500 years, 4000 years, 5000 years before, right? And we have traces or evidences that it might be possible that administration might have came first, because administration could be what? That's not necessary. It should be done by the human beings also. Even the animals, and walking in a particular row is what? A discipline only, administration only. So they are also managing those things. The law of jungle or rule, of jungle. If you see, even the animals can maintain the hierarchy. There is a king, there is council of minister, and so on. So some bit, though it's very hypothetical, but we can say that yes, there are traces where we can say administration might have came first.
But there are traces where we can say people might have came first also, because initially we were food gatherers and hunters, and then probably we started with some sort of civilizations, basic civilization, evolving from Homo sapiens to human evolution age and all those things, and then we might have looked into administration. So there are a lot of stories actually, right, which are associated with it. Some are based upon mythological aspects, that is, myths. Myths means something which may be real, may not be real. Then some scientific approaches were given, and then we got into the formation of something called city, state, nation, country, and then we thought of the various wings. So what I'll do in today's class, I'll explain you the complete chronology of how this particular discipline has developed, and then you would be in a better position to understand that exactly how the public administration term came into existence. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So let's talk about this. Now, when we talk about public administration, there are two contexts. One, this term considered to be what? Originated in modern times, right? So when we say modern times, basically you can remember one year, 1887. Why it is very important, I'll tell you. So we can say towards the second half of the 19th century, this particular subject or discipline came into, and the person who coined or originated this term was known as Woodrow Wilson. Now, Woodrow Wilson is also considered to be the father of public administration, right? And who was Woodrow Wilson? Basically, you may know him as he was the former president of United States of America. He had a very key role to play as far as the League of Nation is concerned. When League of Nation, you might have heard about. It is an institution which was formed after the First World War, right? So League of Nation, he was a architect of League of Nation also. Plus, for us, he is considered to be the discipline public administration or father of the discipline public administration. So this is a sure short fact. But the question is before 1887, right? So when we talk about before 1887, was there something called public administration? So officially the answer is no, right? But theoretically, if we say, definitely the answer is yes. As I told you that if there was no administration, how come we have managed the great civilization like Indus Valley civilization you might have heard about, the Greek civilization you might have heard about, right? Mohenjo-daro civilization you might have heard about, or Harappan civilization. So these are civilizations. Civilization means the people started living in a civilized or follow a rule or set of regulations rather than just like food gatherers, hunters, or the wanderers and so on. No, they have started living in a planned manner. There was urban planning also, there was rural planning also, there was tribal culture, of rules and regulations. Everything was there, and that was there maybe from ancient times. So when we'll go to the modern times, from there we can start understanding the discipline in a different way. But first thing is we need to understand what was the scenario before 1887 and when exactly this discipline started coming in. All right. Yes, sir. Okay. Now, why 1887 was considered to be a landmark year, right? So actually, Mr. Wilson or Woodrow Wilson published an essay, which became a paradigm for carving out the discipline of public administration. We'll talk about that essay also. But before that, what was the scenario? Before that, the scenario was public administration was considered to be what? A daughter of a mother discipline that was called political science. So basically, it was political science which was considered to be present, right, as a mother discipline, and public administration was something which was carved out of it. It was taken out of it. Maybe we can say what just one of the part of political science which was related with execution of the policy has been taken out by Woodrow Wilson. That's why Woodrow Wilson is termed to be or designated to be father. But largely, if we talk about then mother discipline, or we can say 75% is the weightage of political science, 25% would be the weightage of public administration if we talk about this subject as a whole. Right. So when we talk about political science, according to the political science scholars, this discipline is somewhat
4,500 years old. Right. So since public administration was supposed to be the part of political science, the corollary goes that even the public administration, though not as a separate discipline, but as a part of political science, is somewhat what 4,500 years old. But if you see contemporary part, then public administration is a newborn baby, hardly of 150 plus years. So it's a newborn baby or a new subject in the league of humanity. Like if we talk about older subject like history, geography, political science, etc., anthropology, they may run from 3,000 to 4,500 years. But in that sense, if we talk about public administration, so from 1887 till 2025, we can say just 150 years plus old discipline or relatively new discipline in terms of historical sense. So when we talk about let's say evolution of the discipline before 1887, what you have to remember, it was a part of political science. How the political science has started and how the public administration was carved out of it is nothing but what the subject of our understanding. So up to here, whatever we are saying is clear. Yes, sir. Yes, Any sir. confusion? Anything? Yes or no? Yes, sir. What is the Yes, confusion? sir. Clear. Clear, Acha, sir. okay. See what we are trying. We are trying to build a level from where the public administration has started developing, and for that we are trying to dig the root कि यार ये आया कहाँ से है ना, शुरू कैसे हुआ. एक बार ये समझ में आ गया कि आया कहाँ से, शुरू कैसे हुआ, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए चेंजेस को पढ़ना जो हुए हैं अब तक और आगे जो होंगे उनको भी समझने के लिए. लेकिन अगर हमारा बैकग्राउंड मिसिंग है, बेस मिसिंग है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू व्हाट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में हुआ क्या. यस. Yes, sir. Yes, sir. Let's continue again. और कोई भी डाउट होता है प्लीज डू आस्क, in between also you can ask. Now when we talk about this, now the question shifted that political science कहाँ से origin हुआ. क्यों? क्योंकि हमें पबेट समझने के लिए समझना होगा कि political science कैसे evolve हुआ. हालांकि हम political science का evolution नहीं पढ़ रहे हैं, but we are trying to understand the evolution of pubet. However, it is related with the political science because political science is considered to be the mother discipline for public administration. तो इसीलिए हमें वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना. अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, the problem is that the public administration actually have a base of political science, but political science also evolved with the base of philosophy, right? That means if I have to understand the origin of public administration, I have to understand the origin of political science. But to understand the origin of political science, I need to understand some bit of philosophy, right? आप कहेंगे ये क्या है? See, प्रॉब्लम क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग सब्जेक्ट से कंटेंट लिया गया. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच. ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज PubAd has no identity of its own. In fact, you'll be surprised to know that public administration is a subject which is built by taking something from the other subject. As I told you, something from the political science we have taken, something from, let's say, philosophy we have taken, something from sociology will take, something from anthro also will be there, something from history also would be there, something from law as a discipline also would be there, right? And here we can say miscellaneous. So point is, public administration kaisa hai? Yes, public administration is like Delhi, right? When we say Delhi, that means what? Delhi का अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उधार की जिंदगी है ना? क्लाइमेट, हिमाचल में कुछ होगा, पंजाब में कुछ होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ होगा, दिल्ली में प्रभाव पड़ेगा, राजस्थान में गर्मी पड़ेगी, दिल्ली में गर्मी पड़ जाएगी. तो पॉइंट इज उधार की जिंदगी जी रहे हैं. या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसिप्लिन व्हिच इज अ बोरोड वन फ्रॉम व्हाट, मल्टीपल सब्जेक्ट्स. इसमें हमें थोड़ा सा सोशियो का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में समझनी पड़ेगी. तो आइडिया इज व्हाट, वी हैव टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग, बट एंड ऑफ द डे द मदर डिसिप्लिन इज गोइंग टू बी व्हाट, पॉलिटिकल साइंस. अब पॉलिटिकल साइंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसका भी एक मदर डिसिप्लिन है, एंड दैट इज philosophy. So ऐसा कहा जाता है philosophy is the root of all the subjects. Initially the things were started philosophizing, and then the subjects like anthro, socio, geography, history, all these things have started coming. So
ठीक है, और सब्जेक्ट के स्कॉलर अपने सब्जेक्ट को बड़ा बताते हैं, नो डाउट अबाउट इट. लाइक वी आर अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो उनसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये हम बाद में प्रूव कर देंगे कि भाई हम उनसे पैदा नहीं हुए, दे आर द वन हु बोर्न आउट ऑफ द मदर डिसिप्लिन कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी विल एक्चुअली वाउच फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन मान लो हमारे स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी का है, तो क्या कहेगा? What he will say that geography is a mother discipline and rest all the subjects have evolved from geography. If somebody is from socio, then sociology is the mother discipline, क्योंकि सबके हिसाब से कुछ ना कुछ पहले ही आया है. भाई ज्योग्राफी में अर्थ नहीं बना तो बाकी चीज आई कैसे? सिविलाइजेशन आया कैसे? इंसान कैसे आए? सोशियोलॉजी में अगर सोसाइटी ही नहीं थी तो फिर कुछ भी नहीं था. राइट. तो सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं. इसी तरह हमारे भी अपने कॉन्सेप्ट है, वेयर विल से दैट द थिंग्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट एट अ लेटर स्टेज. अभी हम क्या देख रहे हैं? द व्यूज ऑफ स्कॉलर, कि उन्होंने क्या कहा है, हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इवॉल्व. भाई हमारे पास हजारों प्रूफ है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट माइथोलॉजिकल स्टोरीज लाइक रामायण एंड महाभारत. You have heard about it? How come Ramayana or Mahabharata kind of epic stories, or we can say the real things? We don't know whether it's real or story, but let's say it's a myth. Mythology है. Mythology मतलब a science we study the myth. Myth may be true also, myth may be false also. तो जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तो इतने बड़े स्केल पे वॉर अरेंज कैसे हुआ? How the administration, if administration was not there, how the soldiers were organized, how the recruitment went on, how they had been trained, how the resources had been allocated, how the king, queen, council of ministers and other people came. यानी रहा होगा तभी तो हुआ होगा. राइट. तो देखेंगे उस चीज को कि हाउ द थिंग्स हैव इवॉल्वड, और हम प्रूव कर देंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूट से था, डे वन से था. ओनली थिंग इज उसको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिली थी. इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट. सेपरेट आइडेंटिटी किसने दिलाई? Woodrow Wilson ने. That's why we claim him or tell that Woodrow Wilson is considered to be father of the discipline. समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक चीजें Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अब जब फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं हम, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, देन व्हाट हैपेंस? फिलोसफी इज मेटा वर्ल्ड में चलती है. वो रियल वर्ल्ड से उसको कुछ लेना देना नहीं होता. सब कल्पना कल्पना कल्पना, इमेजिनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो if the screen is visible, please let me know. Yes, sir. Yes, sir. When we talk about philosophy kind of thing, basically in philosophy what they do, they first focus upon origin of universe. पहले उन्होंने यूनिवर्स की बात, राइट. फिर यूनिवर्स के बाद they have went to origin of अर्थ, राइट. बिकॉज अर्थ आएगा तभी प्लैनेट और बाकी सारी चीजें बनेंगी. ठीक है. जब यूनिवर्स से वो अर्थ पे आए, अर्थ के बाद दे हैव टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट, राइट. जब स्टेट का ओरिजिन हुआ उसके बाद दे हैव टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट, एंड व्हेन द गवर्नमेंट केम देन दे टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स, एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स इट बिकेम द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. टेक्नोलॉजी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? ये Yes. सबसे पहले यूनिवर्स, मेटा वर्ल्ड, यूनिवर्स कैसे बना? फिलोसफी में मतलब ख्यालों में बन रहा है, दर्शन में बन रहा है. फिर यूनिवर्स से क्या बना? बहुत सारे गैलेक्सीज और बाकी सारी चीजें बनी होंगी. ठीक है. उसके बाद अर्थ एक प्लैनेट के रूप में. फिर अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग सिस्टम्स, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या थियरी दी उन्होंने? राइट. फिर उसके बाद क्या बनाया उन्होंने? स्टेट. और स्टेट के बाद फिर विल कम टू गवर्नमेंट, एंड व्हेन वी कम टू गवर्नमेंट दैट मींस वी स्टडी अबाउट पॉलिटिक्स. इज दैट क्लियर? अब मैं इस पे थोड़ा Yes, सा sir. ब्रीफ दे देता हूँ जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी, राइट. क्योंकि खाली वर्ड से समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ब्रीफ विल हैव सो दैट यू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स काइंड ऑफ थिंग. क्लियर? Yes. So here when we talk about the origin of the universe, now philosophy हमें नहीं पढ़ना है, but at least जब हम origin की बात करते हैं तो philosophers, basically all this have started, initiatives were taken by the Greek philosophers. ठीक है. जैसे ग्रीक फिलोसफर्स में बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, बहुत फेमस नाम भी हैं कुछ. You might have heard about a name called Socrates. सुना है? या सुकरात जिसको कहते Yes, sir. Yes, sir. हैं. You might have heard about Plato. Then Yes, sir. Aristotle. सुना है Yes, ये sir. सब? Then Machiavelli. Yes, sir. Yes, sir. Right from ancient to, we can say, the contemporary, all these people have contributed greatly to what? Greatly to the discipline called philosophy and political science.
जैसे सोक्रेटिस की बात करें तो उनको किसी डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, बट वी कैन से बेसिकली ही वाज रिलेटेड टू व्हाट, फिलोसफी। बट प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब की बात करें अगर हम, तो देन वी कैन से दैट दे वर रिलेटेड विद व्हाट, पॉलिटिकल साइंस, right? So Socrates was talking about what, the earth, the planet, and all those things, but Plato, Aristotle, and all those things have started talking about state, government, and politics kind of thing. तो ये कुछ थिंकर्स के नाम है, आपको नहीं भी याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, राइट? सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मीन्स व्हाट, बहुत सारी थियरी है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिफिक अप्रोचेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थियरी, है ना, ये साइंस कहता है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ब्लैक होल्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द गॉड पार्टिकल के बारे में सुना होगा आपने, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हैव यू हर्ड अबाउट इट? लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जिसको कहते हैं, जिसपे ये देखने की कोशिश हो रही है कि कैसे यूनिवर्स बना होगा। तो दिस इज साइंटिफिक अप्रोच, राइट? बट फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या था? फिलोसॉफिकल अप्रोच ये था दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के पहले जो फिलोसफर थे, दैट इज प्री सोक्रेटिस, राइट? कुछ नाम सुने होंगे आपने, जैसे मेनेंडर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ठीक है, नाम को छोड़ देते। प्री सोक्रेटिस जो फिलोसफीज थी वो क्या थी? अनसाइंटिफिक थी। अनसाइंटिफिक मतलब दे वर नॉट बेस्ड अपॉन साइंटिफिक लाइन, रादर दे वर बेस्ड अपॉन द mythological thought, ठीक है? And in the pre-Socrates philosophy, they have said that universe is made up of what? Somebody says that it was made up of, or made up because of fire. Some says it is because of the what? Water. Some says it is because of the soil, etc., etc., etc. समझ में आ रहा है? तो फिलोसफी में क्या कहा गया? फिलोसफी में it has been said that universe is what? Made up of some particular element. जैसे वाटर, तो वाटर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द हीट इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने से कॉस्मोस बना, और ये सब चीजें। तो उनकी फिलॉसफी जो थी वो मेटा वर्ल्ड में चल रही थी, ठीक है? बेसिकली अनसाइंटिफिक आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद जो लेटर स्टेज पे फिलोसफर है, व्हाट दे हैव सेड, दे सेड नहीं, ये गलत है। वो थोड़ा सा साइंटिफिक बेंट लेकर आए, और उसको हम कहते हैं आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। क्या कहते हैं उसको? आयोनियन, आयंस, राइट? उन्होंने कहा नहीं, ये सब बकवास है। एक्चुअली यूनिवर्स बना है फॉर्मेशन ऑफ आयंस के वजह से। आयंस कम्स टुगेदर, दे यूनाइटेड टुगेदर, है ना, उनके बीच में कोलिशन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और उससे सारी चीजें फॉर्म हुई। तो प्री सोक्रेटिस के पहले जो दूसरे मतलब ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या कहा? दैट नहीं, ये सब बकवास है, राइट? हुआ कैसे है? एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रीजन, जिनको हम कहते हैं आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। सो आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है? आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा साइंटिफिक लाइंस पे बोल रहा है, एंड दे आर सेइंग दैट इट इज मेड अप ऑफ द आयंस। हाँ, आयंस मतलब अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, यू कैन कंसिडर टू बी एटम्स। एटम्स आप समझ पा रहे होंगे? सो बेसिकली द होल यूनिवर्स हैज बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ द एटम्स, छोटे 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 स्मॉल एटम्स, एंड दे collaborated together in different shapes, and sizes, and that's how it led to the formation of universe. तो कहीं ना कहीं आयंस वाला जो थियरी है, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट है, that is more close to our today's scientific theory like Big Bang, black hole, or God particle. God particle क्या है basically? We are trying to see that because of this God particle only, Higgs bosons and अगर ये सब चीजें सुनी होंगी तो they are nothing but what? Part of the atom only. But atom वहां पे ठीक है, सबसे माइन्यूट एंटिटी माना जाता होगा। आज हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जैसी चीज है। उसके अंदर भी हम जाएंगे तो क्वार्क्स है, मतलब उसके बहुत छोटे लेवल पे, नैनो लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। लेकिन वो लोग वहां तक नहीं पहुंचे। तो उनका मानना ये था कि आयंस को फॉर्म करके ये सारी चीजें, अर्थ भी उसी से बनी है, सॉइल भी उसी से बना है, एयर भी उसी से बनी है, फायर भी उसी से बना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये वेस्टर्न फिलोसफर्स का मानना था। इसके पहले सुकरात के पहले, सोक्रेटिस के पहले। बट जब सोक्रेटिस आए तो क्या किया उन्होंने? सोक्रेटिस आए तो उन्होंने लॉजिक और रीजनिंग अप्लाई करना शुरू किया, राइट? सो लॉजिक और रीजनिंग मतलब he had actually started giving what? Are you able to see me or not? Yes, sir. Yes.
If there are some glitches, please do let me know. Am I visible and audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, हाँ. Yes, sir. So point is, सुकरात आए तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक देना शुरू किया, थोड़ा रैशनल देना शुरू किया. क्यों देना शुरू किया उन्होंने? बिकॉज उससे पहले जो फिलोसफर्स थे वो किस पे बिलीव करते थे? माइथोलॉजी पे, कहानियों पे. ठीक है. तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, दैट स्मॉल थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, एकदम कहानी की तरह इसको सुनो और बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. बट एटलीस्ट इफ यू स्टडी लाइक इट, लिसन लाइक इट एज अ स्टोरी, देन थिंग्स वुड बी वेरी इजी. सो सबसे पहले प्री ग्रीक फिलोसफर आप कह सकते हैं, प्री सोक्रेटिस में एक स्कूल ऑफ थॉट ये था जो फायर वाटर इन सबको, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट वो था जिसने कहा कि नहीं ये एटम्स और इन सब से बने हैं. और इमीडिएट सोक्रेटिस के पहले जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, all these things have formed because of the what, mythological beliefs, myth. So what is myth? Myth is something which can be real also, it could be what, unreal also. तो अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं कि ये रियल है कि अनरियल है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा. सो मिथ के लिए उन्होंने क्या कहा कि ग्रीक कल्चर में, यू नो, इन द ग्रीक कल्चर देयर आर लॉट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे हमारा कल्चर है वैसे, राइट. उनके यहाँ बहुत सारे देवी देवता होते हैं. बेसिकली दे कॉल देयर गॉड एंड गॉडेस एज टाइटन्स. तो टाइटन्स कहते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन दे टॉक अबाउट द टाइटन्स, टाइटन्स मतलब एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में इतने कोटि देवी देवता हैं, वैसे टाइटन्स बेसिकली देयर आर 13 मेजर टाइटन्स, 13 प्रमुख देवता हैं उसमें, जिसमें ग्रीक फिलॉसफी का ओरिजिन जो होता है माइथोलॉजी पे, उन्होंने कहा कि अर्थ, यू नो, सो नाउ फ्रॉम यूनिवर्स दे आर कमिंग टू अर्थ, एंड दे सेड दैट अर्थ जिसको कहते हैं गाया, so in Greek terms this is called Gaia or Mother Gaia. So Mother Gaia means Mother Earth. ठीक है. अब मदर गाया जो है, राइट, इनका फॉर्मेशन एक लाइटनिंग से होता है, स्काई में लाइटनिंग होती है और इस लाइटनिंग के इम्पैक्ट से मदर गाया जो है वो बर्थ देती है स्काई को, स्काई गॉड. ठीक है. और बाद में क्या होता है, मदर गाया दैट इज अर्थ एंड स्काई गेट मैरिड टुगेदर, इनकी शादी होती है, राइट, एंड they have the kids which are nothing but the titans. ये सब टाइटन्स है, ये सब 13 देवता हैं जो मदर गाया और स्काई के मैरिज के बाद पैदा हो. तो ये उनका बिलीफ है दैट अर्थ इज फॉर्म्ड लाइक इट इज. किसका? जो सोक्रेटिस के पहले ग्रीक फिलोसफर्स हैं, और वो किस पे बिलीव कर रहे हैं? व्हाट? ग्रीक माइथोलॉजी पे. बट सोक्रेटिस क्या करते हैं? ग्रीक माइथोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं कि इरेशनल, ऐसा कुछ नहीं है. और सोक्रेटिस का जो अप्रोच होता है, दैट अप्रोच इज व्हाट? दैट अप्रोच इज, अगर आपने सुना हो कहीं एक टर्म विच इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं इसको, डायलेक्टिक्स कहते हैं. डायलेक्टिक्स मतलब हर एक आर्ग्यूमेंट का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, राइट, साइंटिफिक लाइंस पे. तो कहने का मतलब वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि डायलेक्टिक्स, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी चीज के फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई थियरी जरूर होती है. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप 1 मिनट के लिए, कैन यू सी मी ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट ऑल ऑफ यू, और मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और आप कोशिश, मतलब ये सोचने की या समझने की कोशिश की क्या वो दिख रहा है आपको. तो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर लेट्स से 2-3 seconds or 5 seconds and listen to what I'm saying. Horse, bench, India Gate, ocean, zoom. Open your eyes. ये वर्ड्स बोलने के बाद कुछ हुआ? आंख बंद करके. सर माइंड में इमेज क्रिएट होता है. इमेज क्रिएट हुई, Imagination. इमेजिनेशन हुआ. सो द मोमेंट लेट्स से आई यूज अ वर्ड हॉर्स, आपके दिमाग में क्या आता है? हॉर्स का एक पिक्चर आता है. हाँ सर. कहाँ से आया? Yes, sir. फ्रॉम वेयर यू गॉट? क्योंकि हम ये वर्ड सुने हुए हैं और इमेज देखे हुए हैं. हाँ, मान लो मैं कहूँ कुत्ता, डॉग, and I want to say that dog is horse. Will you believe? No, no, no.
या मैं कहूँ चेयर और टेबल, चेयर इज टेबल और टेबल इज चेयर, तो जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा आप नहीं मानेंगे। क्यों? बिकॉज आपके अंदर एक थियरी बन चुकी है, एक हाइपोथेसिस आपने अज्यूम किया कि हॉर्स वो है जिसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है ना, सर होता है या इस तरह से दिखता है, और ये इमेज हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है। बचपन से हमने हॉर्स को वैसे ही पढ़ा है। वी आर नॉट विलिंग टू बिलीव दैट हॉर्स एंड डॉग्स आर इक्वल, दे आर डिफरेंट। या चेयर एंड टेबल, बट चेयर एंड टेबल या हॉर्स या डॉग का कुछ एक बेसिक एलिमेंट होगा ना, चाहे लकड़ी होगी या फिर वो शेप किसी ने दिया होगा उसको, और धीरे धीरे जब वो शेप दिया होगा तो ओवर 1,000 of years दैट शेप हैज क्रिस्टलाइज। यानी उसने क्या किया, पहले हाइपोथेसिस बनाई कि चेयर ऐसी होनी चाहिए कि 4 पैर होने चाहिए, 2 हैंड रेस्ट होना चाहिए, एक बैक सीट के लिए होना चाहिए। और जब इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने डिजाइन करना शुरू किया तो एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, एंड ऑफ द डे द चेयर लाइक शेप हैड इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सुकरात बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्यूटीफुल? सुंदरता क्या होती है? प्यार मोहब्बत में मत जाओ, ठीक है, यहाँ हम अफेयर की बात नहीं करते। सुंदरता ना Very, नॉर्मल ब्यूटी, कैन यू डिफाइन ब्यूटी? sir, it is a basically very subjective term. हाँ, बट एनीथिंग यू कैन से अबाउट ब्यूटी, समथिंग व्हिच प्लीजेस द आई और सूदिंग द आई। कोई भी ऐसी चीज जो हम आंख से देखें और हमें वो अच्छा लगे, दैट कुड बी अ ब्यूटी। Yes, sir. यस और नो? Yes, लेकिन sir. सुकरात जब यही सवाल दूसरे, सी सोक्रेटिस वाज वेरी इंटेलिजेंट, जब दूसरे से वो ये काउंटर क्वेश्चन करते थे, तो जैसे बंदे ने कहा कि ठीक है मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि आई कैन सी द फ्लावर्स, दे आर ब्यूटीफुल, तो एनीथिंग विच सूदिंग द आई इज ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा ठीक है, क्लोज योर आईज, एंड ही एक्चुअली प्लेड अ पियानो, एंड द पियानो म्यूजिक वाज वेरी वेरी सूदिंग फॉर दैट पर्सन। नाउ इज पियानो ब्यूटीफुल? तो जो पहली वाली थियरी थी वो गलत हो गई, क्योंकि आपने कहा वो चीजें जो आंखों को अच्छी लगती हैं वो सुंदर है, ये तो हम कान से सुन रहे हैं, तो फिर ये कैसे सुंदर हुई? देयर इज अ डायलेक्टिक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। तो उन्होंने कहा हर चीज का डायलेक्टिक होता है, और इस तरह से डायलेक्टिक मतलब एक कोई थीसिस और उसका एंटीथेसिस, मतलब एक कोई पॉजिटिव उसका नेगेटिव, दोनों पे नेगोशिएट करके आर्ग्यूमेंट करके तब तक करते रहना, तब तक करते रहना जब तक कोई थियरी ना बन जाए। अब आप समझ रहे हैं? तो सोक्रेटिस का अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज फॉर एवरीथिंग ही एक्चुअली गोज फॉर थीसिस एंड एंटीथेसिस। आप कहेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि सोक्रेटिस वाज द वन हु गेव द ओरिजिन ऑफ स्टेट, नॉट अपॉन द बेसिस ऑफ माइथोलॉजी, मदर गाया, lightning, earth and all those, nothing. He actually gave the concept of state based upon what? Based upon the dialectics, that is thesis and antithesis, कि state का formation क्यों जरूरी है। See, we are not getting into the details of those things, but पता होना चाहिए कि कहाँ से है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो तब होगा ना जब स्टेट होगा, तो ये जानना होगा कि स्टेट कहाँ से आया। समझ पा रहे हैं आप? तो एक वर्ड में आप याद Yes, sir. रखें, अगर आपको ओरिजिन बताना भी है तो ठीक है, स्टेट इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज नथिंग बट it was created because of some thesis, that is some assumptions, and some counter assumption, that is antithesis, according to what, according to Greek philosophers। समझ पा रहे हैं आप? तो जब स्टेट बना तो फिर गवर्नमेंट कैसे आई उसमें, पॉलिटिक्स कैसे आया, ये हमें समझना होगा, तब हम जान पाएंगे दैट व्हाट इज द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Somehow, Yes, sir. थोड़ी देर में और Yes, क्लियर sir. हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट, थिंग्स वुड बी मोर क्लियर एज वी प्रोग्रेस, क्योंकि हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो ना हमें पढ़ना है और जो ना शायद हमने पढ़ा है। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स, यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। ओके, ठीक है। सो व्हेन वी लेट मी शेयर द स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल? No, sir. नाउ आई थिंक इट इज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. हियर डायलेक्ट्रिक्स के आर्ग्यूमेंट पे उन्होंने, डायलेक्ट्रिक्स मतलब गिविंग अ थीसिस एंड द एंटीथेसिस फॉर दैट, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि दोनों में से एक सही प्रूव ना हो जाए, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, Socrates has rejected the mythological approach as far as the formation or creation of state is concerned। लेकिन सोक्रेटिस के जो चेले थे
especially the people like Plato and all those things, they were far ahead of Socrates also. वो उनके भी गुरु थे, मतलब हालांकि Socrates उनके गुरु थे, but they were like having more rational approach as far as formation of the state is concerned. Anyways, our story ends here, and when we talk about state, तो state कैसे existence में आया? Now, when we talk about state, you might have heard about a term called city-state. Now, what is meaning of city-state? अगर आप modern day political science पढ़ेंगे, then you might have heard about a term called nation-state, right? इस term के बारे में सुना है? What is nation-state? Anyone? Yes, Have you heard sir. about this term? Yes, sir. Just say, for example, Yes, sir. when we talk about India as a state, then हम इंडिया को जब एज अ स्टेट कहते हैं, राइट, तो इंडिया एज अ नेशन भी कहते हैं. नेशनैलिटी हमारी क्या है? इंडियन है. सो वी डू से दैट वी आर अ व्हाट, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर होगा, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन विल टेक अप द डिस्कशन बैक. नेशन स्टेट मतलब एक बड़े देश की बात करते हैं, बिग कंट्री लाइक India or America or Australia, something like that. ठीक है. However, when we talk about city-state, basically we are talking about small states. जैसे आपने एथेंस का नाम सुना होगा ग्रीस में, ठीक है, स्पार्टा का नाम सुना होगा, ये सब छोटे छोटे स्टेट थे. अब ये छोटे छोटे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो बेसिकली द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द स्टेट, और ये एट वॉर भी रहते थे कभी कभी, जैसे पेल्पेनेशियन वॉर के बारे में अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो दे वर एट वॉर आल्सो. नाउ दिस पीपल हु यूज्ड टू रिसाइड इन स्मॉल सिटीज, ठीक है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था. फॉर एग्जांपल, they had made a system. Let's say, for example, this is the city of Sparta. Let's say this is the city of Athens. ठीक है, तो यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं. अब किस तरह के लोग थे, राइट, एंड हाउ दे हैड ऑर्गेनाइज्ड द सिस्टम. क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ जाता है, तो देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट. So how they have formed the state, if we understand that, then we can understand that how they have formed the system of government. अभी जितने लोग हैं स्पार्टा में, एथेंस में, ऐसे बहुत सारे सिटी स्टेट होंगे, ठीक है. तो हाउ दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. इसमें क्या होता था, वॉट एवर द पॉपुलेशन वॉज देयर, दैट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास. और बेसिकली वहां पे जो क्लासेस होती थी, दे वर बेस्ड अपॉन मेनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन के बेसिस पे, एसेट के बेसिस पे, ठीक है. इंडिया की बात करें तो कास्ट, क्लास या इस तरह के बेसिस पे, राइट, रेस के बेसिस पे, तो एक क्लासिफिकेशन थी. अब एंशिएंट ग्रीक में क्या होता था, जो भी लोग हैं इसमें से देयर आर सम पीपल हु आर पावरफुल, ठीक है. तो दे वर पावरफुल इन सेंस व्हाट, आइदर दे वर aristocracy, or they were educated, or they were money lenders, land owners and all those things. तो कहीं ना कहीं they were what, in power. या फिर अगर हम बात करें तो they were divided into two groups. One was known as ruling class, right, and other was known as ruled class. यानी उस पूरे टेरिटरी में, लैंड में, दो तरह के लोग होते थे. हालांकि उस टाइम की अगर हम बात करें, if we talk about them, then at that time there was something called aristocracy. एरिस्टोक्रेट या पावरफुल लोग होते थे. देन दूसरे जो होते थे वो कहते थे फ्री मैन, कहते थे उनको, दे आर फ्री, मतलब दे वर नॉट स्लेव्स, एंड रेस्ट वर स्लेव्स. इस तरह से डिवाइडेड था, ठीक है. उनकी जो सोसाइटी थी, एथेंस की, स्पार्टा की, ये सब जो सोसाइटीज थी, ये सब डिवाइडेड थी तीन तरह के लोगों में. वन वॉज what, the ruling elites, what we can say, or the powerful people. Others were free men, those were not slaves or sold, and the last category was slaves. तो इस तरह की कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी या लेयर उनके सोसाइटी में होता था. अब हुआ क्या कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, राइट, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जो पहला स्टेट आता है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, एंड देन Socrates philosophy basically was basically known as nature of state.
क्या कहते थे इसको, नेचर ऑफ स्टेट, या फिर इसको स्टेट ऑफ नेचर कह सकते हैं, दोनों टर्म यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर, ये दोनों टर्म अगर हम समझ जाएं तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टेट, एंड वंस वी अंडरस्टैंड स्टेट देन वी कैन अंडरस्टैंड द सिटी स्टेट. Once we understand the city state, then we can understand the nation state. And once we done with the nation state, we can understand what is the government. और अगर गवर्नमेंट समझ में आ गया तो फिर हमें समझ में आ जाएगा पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, सब सर के ऊपर जा रहा है. आर यू एबल टू हाँ सर, क्लियर हो रहा है. सम बिट ऑफ इट, या सब कुछ बाउंसर चल रहा है एकदम? मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ. पहले हम यूनिवर्स को समझने की बात कर रहे थे, फिर हम अर्थ को समझने की बात कर रहे हैं. अर्थ में अब हम टेरिटरी को, जो अलग अलग स्टेट्स के फॉर्म में, उनको समझने की बात कर रहे हैं. एक बार स्टेट समझ में आ जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि इसमें गवर्नमेंट बनी कैसी होगी. गवर्नमेंट समझ में आ जाएगी तो फिर ये समझ में आएगा कि पॉलिटी चलती कैसी है, और जब पॉलिटी समझ में आ जाएगी तभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट, अ डॉटर डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटी. पॉलिटी इज व्हाट, अ डॉटर डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी. तो हम फिलोसफी से पॉलिटिकल साइंस से फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू इट मे बी कंफ्यूजिंग, सो वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच द क्लास अगेन. दोबारा हो सकता है आपको क्लास देखनी पड़े, या कुछ टर्म्स ना समझ में आए तो देन दैट विल मेक श्योर विल क्लियर इट. बट वंस यू आर क्लियर विद इट, आने वाले टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी. इज दैट क्लियर? सो Yes, sir. any confusion, any doubt, we are open for the questions. You can ask any point of time. So let's make it simple once again. We have started understanding the universe. Then we have started understanding formation of earth. Now earth पे हम अभी formation of state की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको वेस्टर्न एग्जांपल्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आई कैन गिव सम इंडियन एग्जांपल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड. डू यू वांट दैट? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा इंडियन एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मुझे लगता है, Yes, sir. क्योंकि वेस्टर्न में तो हम Yes, sir. पता नहीं कहाँ किसकी बात कर रहे हैं. प्लेटो, सुकरात और ये सब धुआं निकल रहा होगा दिमाग से अब तक मेरे ख्याल से. कहाँ से ज्वाइन कर लिया ये क्लास, है ना, इसीलिए फ्री बोला था ताकि जहर पिला दे ये क्लास. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. घर पे क्लास लेने में तमाम दिक्कतें आती हैं. आदमी तो आदमी, कुत्ते भी परेशान. ठीक. सो बीच बीच में आपको कुत्ता, गाय, बैल, है ना, बकरी, इन सब की आवाज है तो परेशान मत होइएगा, ये सब आसपास ही रहते हैं ना. ठीक है, मतलब तबेले में बैठ के क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, दे आर लाइक नेबर्स ओनली. सो पॉइंट हियर इज, थोड़ा सा हम अगर है ना इंडियन एग्जांपल से भी कोट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. आई विल कोट दैट. ओके, यस, Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट. So when we talk about this particular thing, what exactly and how exactly it took place, let's try to understand. जब हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सिटी स्टेट की, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी एंड आई विल कोट इंडियन एग्जांपल आल्सो. तो अभी तक सिटी स्टेट को हमने क्या समझा है? अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ठीक है, राइट, यानी सिटी, नॉट द कंट्री वी आर टॉकिंग. सिटी मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल सिटी वेयर एवर यू आर रिसाइडिंग. छोटा सा प्लेस है, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं. सम पीपल रिसाइड हियर एंड दे कॉल इट स्टेट. उनके लिए स्टेट यही है. आज के जैसा नहीं कि इंडिया एज अ स्टेट, अ बिग कंट्री, और चाइना एज अ स्टेट. तो एक छोटा सा जो शहर है उसको वो स्टेट के तौर पर ले रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो आज की कंट्री है. तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, all of them could be what, city state like only. So we have more than 750 city states and so on. But मॉडर्न टर्म में हम सिटी स्टेट्स नहीं यूज करते, हम नेशन स्टेट यूज करते हैं. लेकिन दोनों ही चीजों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट.
एक बार पहले इसकी क्लैरिटी लेते हैं, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। जब ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, देन इट वुड बी मोर इजी टू प्रोसीड। सो इन द प्रीवियस स्लाइड इफ यू रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ वो दो तरह से था, नेचर ऑफ स्टेट एंड स्टेट ऑफ नेचर, right? And once you got clarity with the state, definitely you'll be able to understand the government, politics, and administration. So let's see what was nature of state. अब एक hypothetical situation assume करो, nature of state इसको simple words में आप कह सकते हो natural state. That is the state which is created by the nature. There was no people's contribution involved. तो जैसी बात है, दो चीजें थी. One side there was population. Some people कहीं भी रहते हो, सिटी में रहते हो, स्टेट में रहते हो. Other side there were resources. So यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे resources. Resources means the natural and artificial both. So here let's say we are talking about the population and here we are talking about resources. अब ये कोई भी civilization के लिए आप ले सकते हैं, Greek civilization, Indian civilization या फिर Harappan civilization. There were some people and there were some resources. How the things have started turning into disaster. Initially, the population was very, very less, and the resources was very, very high. That meant availability of resources was much more than the need of the people. जितने लोग थे, मान लो 500 लोग हैं, 500 people are there in a particular territory. Resources are available for 50,000 plus people. इतने resources है कि 50,000 लोग आराम से जिंदा रह सकते हैं, खा सकते हैं. There is no problem, but total number of people are 500 only. लेकिन दिक्कत क्या हुई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, as the time started progressing, this numbers went on increasing. ठीक है, ये नंबर्स बढ़ने लगा और ये 500 से 5,000 हुआ, 5,000 से 50,000 हुआ, 50,000 से फिर 5 लाख हुआ एंड सो ऑन. ये जो रिसोर्सेस थे दे स्टार्टेड डिप्लीटिंग. समझ पा रहे हैं आप? सो यहाँ पे क्या हुआ, जो 50,000 लोगों के रिसोर्स था, मान लेते उतना था, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई, 5 करोड़ हो गई. अब 5 करोड़ लोग हैं लेकिन रिसोर्सेस से 50,000 के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज बाउंड टू जनरेट अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट होगा. क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्योंकि एक थियरी आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यस और नो? यानी सर्वाइवल किसका होगा? पहले क्या था, लोग कम थे, रिसोर्सेज ज्यादा थे, कोई टेंशन नहीं थी, खुद भी खाओ दूसरों को भी दो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, रिसोर्सेज कम होने लगे, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट. और कॉन्फ्लिक्ट में whomsoever is the mighty, mighty means powerful, राइट, वो सर्वाइव करेगा. या फिर जो पावरफुल है वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को ओन करेगा, एक्वायर करेगा. और बाकी जो लोग होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे. See, try to understand how the state is formed, then it would be very easy to understand how the politics and the government came into existence. So अब क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन थी बिल्कुल टेंशन फ्री थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन जब ये पॉपुलेशन आई तो उसमें टेंशन बढ़ गया. और इसमें क्या हुआ, दो तरह के लोग बन गए सोसाइटी में. एक जो बहुत पावरफुल है, वेरी वेरी पावरफुल, राइट, वो क्या कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं. एंड द पीपल हु आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावरफुल नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या हो गए, दोज पीपल आर द वन which are deprived of resources and they became dependents. और उस तरह के सोसाइटी में, स्टेट में, सिटी स्टेट में दो क्लास बन गई. एक पावरफुल क्लास जो बाद में आगे जाकर क्या बनती है, रूलिंग क्लास, और एक पावरलेस क्लास जो बनती है रूल्ड क्लास. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ इस सर. तरह से रिसोर्सेस की वजह से सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. आप इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा कि अगर हम होते ऐसा, तो मान लो अभी हम 20 लोग हैं और हमारे पास 2,000 लोगों के लिए रिसोर्सेज, तो कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर हम 2,000 लोग हैं और सिर्फ 20 के लिए रिसोर्सेज, तो फिर जो ताकतवर होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो पावरफुल होगा, he or she will try to own the resources. He or she will try to acquire the resources, get the resources, either by force or by other means, by hook or crook. And the people who are less powerful, they will do what? They will become dependents, parasites, या फिर गुलाम हो जाएंगे. slaves बने कैसे? ऐसे ही बने होंगे.
Getting some bit of clarity? Yes or no? Yes, sir. Perfect. Now Yes, sir. what happened next? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई. किसमें? रूलिंग क्लास में और रूल क्लास में. राइट, बोथ हैव स्टार्टेड फाइटिंग, क्योंकि रूलिंग क्लास वाज ऑलवेज ट्राइंग टू डोमिनेट द रूल क्लास. और यहां से एवोल्यूशन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. अब दोनों जो क्लास थी, सिंस they are, let's say this is the ruling class, right, and this is the rule class. रूल क्लास जो है किसी भी देश में आज भी, इवन टुडे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी मेजॉरिटी. राइट, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में रूलिंग क्लास कितनी है? यस, ऑल दो 790 एमपीज, 790 बागड़ बिल्ले हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, सो कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कितने लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं? 1.4 बिलियन पीपल. So who is in majority and who is in minority? The ruling class is in minority and the rule class is in majority. ये minority में और ये सर majority. आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. Oh, I'm so सर स्क्रीन नहीं आ रही है. Should I repeat? अब आ रही है? नो सर, नो. यस सर, यस सर, यस. Thank you, thank you. इसीलिए आप बता देंगे तो अच्छा है. What I was saying that since there were two class, one was ruling and other was rule class. Ruling class is always in minority. Like in India, if we see our politicians, कितने हैं total? 790, 545 in Lok Sabha, 245 in Rajya Sabha. तो 790 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए. यस और नो? यस सर. And these, out of this, some are the ministers and they are taking care of our country and ruling over what? 1.4 billion people, which are in what? Majority. So they are in minority and rule class is in majority. ऐसा उस टाइम भी था, राइट. जब हम नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो जो रूलिंग क्लास थी वो किस में आ गई? माइनॉरिटी में. कुछ लोग हो गए जो बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इस क्लास के पास पावर आ गई, या इस क्लास के पास अथॉरिटी आ गई. और जो रूल क्लास है इनके पास क्या आया? What they got? Actually they got some sort of rights. ठीक है, इनके पास कुछ राइट्स आए. क्या राइट आया? फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ. जिंदा रहने देंगे तुमको, मारेंगे नहीं, बस इतना ही राइट आया इनके पास. बाकी सारा राइट जो पावरफुल क्लास है उनके बीच में आया, राइट. तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन होने लगा. End of the day, what happened as the nature of state progress, both the class, the ruling class and rule class, decided to end the conflict. इनके बीच में जो conflict है, they decided to end, right? कि यार हमारा जो झगड़ा है इसको खत्म करते हैं. And how they decided to end the conflict? They decided to enter into a contract. कहाँ पे आने की कोशिश की उन्होंने? Contract. Contract simple means an agreement or a sort of compromise, we can say. कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगी. Yes or no? यस सर. Yes, sir. Right. That means what? Let's say we are divided into two class, right? हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है. How come we are going to sort out that? We have to reach on some consensus. दो दोस्तों के बीच में झगड़ा तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. दो पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और किड्स के बीच में है, तो कहीं ना कहीं लाइन तो बनानी पड़ेगी. We have to sort out that conflict. That means we have to enter into a sort of compromise or sort of agreement or sort of contract. Yes or no? तो उस सोसाइटी में, उस स्टेट में, कौन से स्टेट में? विच वॉज नेचर ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ नेचर, मतलब नेचुरल जो स्टेट बना, एक डोमिनेंट क्लास हो गई, राइट, और एक सप्रेसिव क्लास हो गई. दोनों में झगड़े चल रहे थे, बहुत सालों तक चले. अब उन्होंने कहा कि यार झगड़ा खत्म करते हैं, लेट्स रीच टू अ कंसेंसस, लेट्स रीच टू अ कॉम्प्रोमाइज. इसी कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहा जाता है. द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज social contract theory. Why I'm emphasizing this word? Social contract theory is the basis which gave birth to today's entity, what we called as state. State बनना ही नहीं होता अगर ये दोनों
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आज हमारे पास स्टेट नहीं होता। फॉरगेट अबाउट नेशन स्टेट, हमारे पास सिटी स्टेट भी नहीं होती। हम एक लेसेस फेयर स्टेट में होते जहां एक दूसरे का गला काटने के लिए 24 घंटे बैठे रहते, कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? तो हाउ स्टेट इज कमिंग फ्रॉम फिलोसफी टू नाउ पॉलिटिक्स। कैन यू सी द ट्रांजिशन? यस और नो? तो पहले कल्पनाएं चल रही थी, ब्रह्मांड ऐसे बना होगा, यूनिवर्स ऐसे बना होगा, अर्थ ऐसी बनी होगी। उसके बाद फिर सिस्टम की बात करने की शुरुआत हुई। फिर उसमें डिसाइड हुआ कि नेचुरल जो स्टेट था वो मॉडर्न सिटी स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, और फिर जो मॉडर्न सिटी स्टेट है वो कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी देखेंगे। बट अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस? Yes. अगर Yes, मान sir. लो दिक्कत हो रही है तो, जैसे मैंने कहा अभी लास्ट वाले इसमें कि थोड़ा सा इंडियन एग्जांपल से समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स टेक वन और टू इंडियन एग्जांपल आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस, शैल वी? Yes, sir. Yes, sir. So when we talk about this social contract, let me complete this first. So this social contract, right, या फिर इसको पॉलिटिकल साइंस में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहते हैं। This social contract theory actually gave birth to what? The term what we call state, right? अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसको क्या कहते हैं? दिस कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट, राइट? और कॉम्प्रोमाइज, मॉडर्न डे में इसी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। So if somebody says, what is Indian Constitution today? Indian Constitution is nothing but what? It's a part of social contract theory. And this social contract theory, which actually gave rise to the term called state, क्या किया इसने इस कॉन्ट्रैक्ट में? इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड को कुछ न कुछ दिया। दो साइड क्या थे? One was what? Ruling class. So let's say this is the ruling class. They have got something, क्योंकि जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होगा तब तक दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करेंगे? सो जो रूल क्लास है, जो मेजॉरिटी में है, उसने क्या कहा कि ठीक है, अब जितने रिसोर्सेस हैं वो अक्वायर कर लीजिए, आप अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना पावर है वो आप अपने पास रखिए, जितनी अथॉरिटी है वो आप अपने पास रखिए, जितने रिसोर्सेस हैं उसको आप कंट्रोल कीजिए, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। This power, authority, resources were given to what? The ruling class. And in turn, ruling class will do what? Ruling class will protect some rights of ruled class. क्या राइट्स चाहिए रूल क्लास को? तो रूल क्लास ने कहा हमें मारो मत, डोंट किल अस, दैट मीन्स गिव अस राइट टू लाइफ, गिव अस सम बेसिक फ्रीडम, लेट्स से राइट टू फ्रीडम, गिव अस इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, डोंट डिस्क्रिमिनेट, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूलिंग क्लास विल गिव सम राइट्स टू रूल क्लास एंड रूल क्लास विल गिव पावर, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू रूलिंग क्लास। यहां तक समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. एंड Yes, sir. मॉडर्न डे में अगर हम कहें व्हाट दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इज, तो एवरी कंट्री हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री व्हाट सेज टू थिंग्स ओनली, हु विल हैव द पावर और अथॉरिटी, किसके पास पावर और अथॉरिटी दी है? यस, वी नो दैट ऑल द पावर बिलोंग टू व्हाट? स्टेट। और किसको राइट्स और ड्यूटीज दी है? It's a citizen. यस, ऑल द सिटीजन। सिंपल। यही चीज तो उस टाइम भी हो रही थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फिफ्थ टू थर्ड सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, जब ये चीजें चल रही थी, नेचर ऑफ स्टेट बन रहा था। तो रूल क्लास हैज सेड दैट वी नीड सम राइट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स वी आर गिविंग द पावर। रूलिंग क्लास ने कहा ठीक है, यू आर गिविंग अस द पावर, विल मेक श्योर दैट विल नॉट टेक अवे योर राइट टू लाइफ और फ्रीडम और इक्वालिटी। अब समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, हैव यू हर्ड अबाउट अ टर्म कॉल्ड मत्स्य न्याय? नाम सुना है? Yes, sir. What is मत्स्य न्याय? मत्स्य न्याय is nothing but, yes, कहीं कोट पढ़ा है? Bigger fish swallows the what? Smaller one. Smaller ones. ये सुना है ना? Yes, sir. Hmm. Yes, That sir. means what? Bigger here means those who are what? Powerful.
those who are mighty, military might, financial power and all those things, what they will do? Smaller fish means what? Same ना, the ruled class, इसके पास कुछ भी नहीं है, और पावर किसके पास है? रूलिंग क्लास के पास। तो रूलिंग क्लास क्या करेगी? ऑब्वियसली विल रूल ओवर द पीपल हु आर रिसोर्सलेस। बट वॉज मस्ट न्याय जस्टिसेबल? ये जस्टिसेबल था? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इन लोगों के राइट्स रेस्पेक्ट नहीं किए जाते। जो भी पावरफुल है, जो बड़ी मछली को छोटी मछली को खा जाएगी, मतलब छोटी मछली का राइट टू लाइफ गया। इससे बाहर कैसे निकले? तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट धर्मशास्त्र, सुना है? Yes, sir. व्हाट वाज धर्मशास्त्र? Yes, sir. Dharma means not religion here we are talking about. You might have heard about Manu, or Yes, sir. Manu Smriti you might have heard about. So who was Manu? Manu was a king who was sent on planet Earth by the creator of the universe, that is Lord Brahma, to establish what? Dharma Shastra. And to end what? Masnya. And Smriti means anything which you hear and write it as a story. So whatever he said has been written, and that document is known as Manu Smriti. Right? Modern constitution is also known as some sort of what? Manusmriti only, and to establish Dharma Shastra. How the Dharma Shastra will establish? Only if the Matsnyaya will end, right? And for that, again, what they have to do? They have to enter into the what? Contract. समझ पा रहे हैं आप? तो अगर हम इंडियन स्टेट की भी ओरिजिन की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी हमें कहती है। बस फर्क क्या है? वहां पे वो सिटी स्टेट जैसे टर्म की बात करते हैं, और यहाँ पे हम मत्स्य न्याय या धर्मशास्त्र जैसी बात करते हैं। अब समझ में आ रहा है? नाउ कैन यू रिलेट? Yes. Yes, sir. क्योंकि मत्स्य न्याय जो था वो क्या था? नेचर ऑफ स्टेट था कि जो पावरफुल होगा वो रिसोर्सेज को एक्वायर करेगा, जो पावरलेस है उसको गुलाम बनाएगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था। हमारे यहाँ जो हो रहा था उसी चीज को हम क्या कह रहे थे? मत्स्य न्याय कह रहे थे। तो उसको समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, इसके लिए क्या किया गया? मनुस्मृति की रचना की गई, है ना? ये भी माइथोलॉजिकल है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सिमिलैरिटी देखिए आप, लगभग लगभग वैसी ही है। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ स्टेट जहां भी होगा वहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आना जरूरी है, और जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तब तक स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Now, when Yes, sir. after the social contract, the state has started what? Establishing, forming itself. तो state कैसा होना चाहिए? Right? How the state should be? So initially people were of the opinion that it should be a ideal state. लेकिन पता है ideal चीजें real में नहीं हो सकती. Yes or no? So basically they talked about what? Ideal state. अब the social contract will give rise to what? State. But how the state should be? Right? तो सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई? आइडियल स्टेट की। और आइडियल स्टेट, द टर्म इटसेल्फ इज आइडियल, दैट विल नॉट एग्जिस्ट इन रियल। अब आइडियल स्टेट के बारे में कौन कहता है? तो इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द पीपल लाइक प्लेटो, है ना? एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो जो थे वो एकदम आइडियल स्टेट की बात करते थे। वो एक्चुअली क्या बात करते थे? द स्टेट शुड बी गवर्न बाय अ पर्सन नोन एज फिलोसोफर किंग। स्टेट को कौन रूल करेगा? किंग। मोनार्की की ही बात करते हैं। बट एरिस्टोटल, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, डिड नॉट अग्री टू इट। नहीं, फिलोसोफर किंग नहीं, एक्चुअल किंग। मैकियावेली की बात करें तो वो तो और ज्यादा कनिंग प्रिंस की बात करते हैं। यानी सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं? स्टेट, इफ आई कैन रिप्रेजेंट द स्टेट विद अ ट्रायंगल, राइट? सो ऑब्वियसली एनी स्टेट हैज टू बी रन, देयर हैज टू बी व्हाट? हेड ऑफ द स्टेट, कोई ना कोई हेड होना चाहिए। तो इनिशियली प्रेसिडेंट जैसे टर्म नहीं थे, इसीलिए हेड की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? किंग या क्वीन, राइट? अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो स्टेट आएगा वो आइडियल होगा। जैसे धर्मशास्त्र जो है वो क्या है? आइडियल है।
राम राज्य आपने सुना होगा, आइडियल वो कभी आएगा नहीं। उस जैसा हम बनने की कोशिश कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू बिकम लाइक दैट, बट इट विल नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट्स फॉर श्योर। तो प्लेटो कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं कि फिलोसफर किंग होना चाहिए जो कि स्टेट को रूल करे, जिससे स्टेट में क्या होगा, कोई भी इनजस्टिस नहीं होगी। यानी अब स्टेट को गवर्न करने की बात आ रही है। स्टेट तो बन गया, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर शुड बी अ किंग हु शुड बी अ फिलोसफर। फिलोसफर किंग मींस व्हाट? जो कि नॉलेजेबल होगा, राइट। अब इनके जो नॉलेज का पैटर्न है वो इतना अजीबोगरीब है, मैं आपको वर्बली ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट व्हाट ही सेज, हु विल बी द फिलोसफर किंग? फिलोसफर किंग कौन होगा? जो अपने देश में किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने देगा। अ पर्सन वुड बी टर्म्ड एज फिलोसफर किंग हु विल नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस इन हिज और हर स्टेट। समझ पा रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे इंडिया इज अ स्टेट। अब हम इंडिया में एक ऐसे राजा की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट अशोका, यू माइट हैव हर्ड अबाउट चंद्रगुप्ता, राइट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हर्षवर्धन, राइट। क्या हम इनको आइडियल किंग कह सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के हिसाब से हम इनको आइडियल किंग नहीं कह सकते। हाँ, हिस्टोरियन के हिसाब से हम इनको ग्रेट किंग्स कह सकते हैं, अपने अपने टाइम के महान राजा थे ये, नो डाउट अबाउट इट, बट वी कैन नॉट कॉल देम फिलोसोफर किंग। क्यों? तो प्लेटो बताते हैं, see again I'm telling it's not a part of our syllabus, right, but it will definitely help you to understand the basic nitties and gritties of state. तो वो कहते हैं फिलोसफर किंग कौन होगा? फिलोसफर किंग ऐसा होगा जैसे कई बार इलेक्शन कैंपेन में आप सुनते हैं ना, हम राम राज्य बनाना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राम राज्य? व्हेन लॉर्ड रामा वाज द किंग, दैट मींस नो इनजस्टिस पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। किसी के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। प्लेटो की सोच कुछ उस तरह की। या यू माइट हैव हर्ड अबाउट कौटिल्य, you know, when we talk about Mauryan Empire, we'll study about Kautilya. So Kautilya also talk about what? A state which is going to be ruled by a king. And there is a very famous quote which we'll study: in the happiness of the people lies the happiness of the king. प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। तो basically somewhat he is also trying to what? Glorify or idealify the king, कि राजा को ऐसा होना चाहिए, उसकी पर्सनल हैप्पीनेस नहीं, पीपल की हैप्पीनेस उसकी हैप्पीनेस होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? और जनरली आप देखेंगे तो कौटिल्य और प्लेटो का लगभग एरा सेम ही जाता है, ठीक है, एक ही के आसपास, बस एक वेस्टर्न साइड में थे और एक इंडियन साइड। उनसे पहले जब सोक्रेटिस फिलॉसफी की बात कर रहे थे, यू माइट हैव हर्ड अबाउट बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, राइट। तो जब वो फिलॉसफी की बात करें तो उस टाइम तो स्टेट हमारे यहाँ रियल में एग्जिस्ट होता था, पाटलिपुत्र था ना, बुद्धा थे कि नहीं थे, स्टेट रन कर रहा था। तो हम तो उनसे काफी आगे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वेस्टर्न है, गोरे लोग हैं, हमारी बात मानेंगे कहाँ? दे ऑलवेज से दैट दे आर द फर्स्ट, बट एक्चुअली इट्स वी आर द फर्स्ट। अब प्लेटो का जो आइडियल किंग है वो कौन है? अब प्लेटो कहते हैं कि आइडियल किंग या जो फिलोसफर किंग है वो कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि फिलोसफर किंग कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए उसको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो इंडिया में तो वैसे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, राइट। तो फिलोसफर किंग तो आएगा नहीं। बट व्हाट ही सेड दैट ही हैज टू और शी हैज टू अंडरगो अ रिगरस ट्रेनिंग। और आपको पता है कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी? कैन यू गेस फॉर हाउ मेनी इयर्स द फिलोसफर किंग हैड टू स्टडी बिफोर बिकमिंग अ फिलोसफर किंग? गेस। 30, 35. 30, 35, 50 years, 50, 50 साल तक वो पढ़ेगा। पहले 5 से लेकर 10 साल तक बेसिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 10 से लेकर 20 साल तक फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, 20 से लेकर 35 साल तक हायर लेवल ऑफ फिलोसफी, 35 से लेकर 50 साल तक प्रैक्टिस ऑफ दैट, आफ्टर दैट ही विल बिकम व्हाट? फिलोसफर किंग। और इतना ही नहीं है, किस स्टेट की बात कर रहे हैं प्लेटो पता है? उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहां किसी की शादी नहीं होगी, नोबडी वुड गेट मैरिड। उस स्टेट में सिर्फ उन्हीं लोगों की मेटिंग की जाएगी, दोस पीपल हु आर ऑफ गुड ब्रीड मेल्स एंड गुड ब्रीड फीमेल। और सारे बच्चे किसके होंगे पता है? स्टेट के। एक भी बच्चा किसी माँ बाप का नहीं होगा। दे हैव टू जस्ट गिव बर्थ एंड दे हैव टू सरेंडर इट टू द स्टेट। स्टेट उन बच्चों को अपनी कस्टडी में रखेगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, और कितना पढ़ाएगा लिखाएगा? 50 साल तक। और फिर उसमें से सिलेक्ट करेगा हु विल बी द फिलोसफर किंग।
उस बच्चे को नहीं पता होगा हु इज द मॉम डैड ऑफ दैट किड, एंड मॉम डैड को नहीं पता होगा कि उनका बच्चा को। एक ऐसा स्टेट जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, राइट, बट हमसे भी वो एक्सपेक्ट करेगा दैट वी शुड नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप। कोई अपना जब होगा तभी तो करप्शन करेंगे। एम्पायर बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। पता ही नहीं अपना बच्चा कौन है। नहीं समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हालांकि इसको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, कम्युनिटेरियन ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी कहा जाता है कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी, हाँ, सारी महिलाएं और पुरुष सरकार के होंगे, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, वो सब भी स्टेट के होंगे, स्टेट ही उनका ख्याल रखेगा, उन्हीं में से एक फिलोसफर किंग चुनेगा। तो ठीक है, मतलब आइडियली तो है ना, रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। लेकिन ये उनके फिलोसफर किंग की डेफिनेशन। स्टेट जो है जब भी बने आउट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, it should ensure that it should not let the injustice take place. That should be the principle of formation of state. तो आज भी स्टेट यही कहता है भाई। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? Our preamble says that we will provide justice, not only political but also social and economic justice हम प्रोवाइड करेंगे। थ्योरी तो हमारी भी वही है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, बट एटलीस्ट स्टेट का बेस तो वही है ना। लेकिन जब उनके शिष्य, जैसे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो का स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, इस तरह से सीरीज में चीजें चलती हैं, तो एरिस्टोटल ने ठीक है गुरुजी आपकी बात सही है, बट आई डू नॉट एग्री, क्योंकि ये रियल में होगा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है ना, इम्प्लीमेंटेशन लूप होल्स है। तो ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट की बात है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा कंसर्न ये है दैट आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे ग्रेजुअली स्टेट एग्जिस्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब चाहे किंग फिलोसफर हो, या फिर इलेक्टेड हो, या फिर नॉमिनेटेड हो, या सिलेक्टेड हो, या फिर उसने पावर से पोजीशन एक्वायर की, किंग अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। किंग को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, टीम चाहिए ना। दैट टीम इटसेल्फ इज टुडे नोन एज काउंसिल। इसी को हम मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द असिस्टेंट्स व्हिच आर देयर टू असिस्ट द किंग इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, दे आर नन अदर देन द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहां से शुरुआत होती है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत अब कहां से होगी? स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद। तो वंस अगेन सबसे पहले क्या आया? फर्स्ट वी केम विद द यूनिवर्स, देन वी केम विद द अर्थ, देन वी केम विद द सिटी स्टेट। सिटी स्टेट में पहले नेचर ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ नेचर, और उसके बाद फिर मॉडर्न स्टेट, एंड देन फ्रॉम मॉडर्न स्टेट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल साइंस केम आउट ऑफ। अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है, और जब ये समझ में आ जाएगा, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन वाज कार्व्ड आउट ऑफ द मदर डिसिप्लिन, पॉलिटिकल साइंस। थक गए? बोर हो रहा है? नहीं सर। No, sir. No, sir. ठीक है, बाउंसर तो नहीं जा रहा है? No, sir. No, समझ sir. आ रही है आवाज नहीं आ रही है? सर, मैं बोली समझ आ रही है। समझ आ रही है, ओके, ठीक है। So let's move on now to understand how the public administration as a discipline from political science came in. Before that, how the political science was carved out, what, from the state, right? State तक clear है? State कैसे बना, city state क्या था, और फिर ideal state क्या था, right? आज city state नहीं है, क्योंकि आज city बहुत छोटी चीज है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, विच इज अ वेरी बिगर कॉन्सेप्ट। वो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी नहीं, जब पेपर 2 पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। बट एज ऑफ नाउ स्टेट का थोड़ा बहुत ओरिजिन अगर समझ में आ गया तो काम हमारा ठीक है। शैल वी प्रोसीड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So when we talk about the next part, that is the head of the state. तो head of the state आप देखेंगे तो generally it was preferred that what, some sort of monarchy। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, टायरनी होती है, ठीक है, किंगशिप होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, डेमोक्रेसी होती है। दैट पार्ट विल सी लेटर ऑन कि टाइप्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, बट टू बिगिन विद स्टार्टेड विद monarchy only. So obviously there has to have king, or there has to have queen, something like that, as what, as the head of the state,
So they are the one who is going to take care of the affairs. But the problem is how they are going to take care of the affairs alone. So for that I have told you that they need some people to whom we can term as council. आज के लिए उन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं. Erstwhile also they were known as by various terms. आप उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, या in Kautilya's term they were called amatyas. Amatyas means ministers. Mahamatya, that is equivalent to prime minister. तो जिनके हेड होंगे that will become the prime minister, वजीर आजम and so on. However, ये जो पूरी टीम है एक्चुअली ये करेगी क्या, what they will do. So स्टेट के कुछ फंक्शंस होंगे जिनको ये परफॉर्म करेंगे, राइट. So let's say when we talk about this as state, क्या क्या फंक्शन होंगे. So mainly it has been identified that there are a couple of functions which needs to be performed. जैसे they have to take care of law and order, they have to take care of revenue policies, they have to take care of development administration if anything is like that, they have to take care of judicial aspect, they have to make the rules and regulations, or we can say formulate the policy. So obviously they need some legislative wings, someone needs to be there for execution of that. So that's how came the executive. या फिर अगर हम बात करें तो actually the state is nothing but what made on three verticals: legislature, executive and judicial. These are the three important elements of the state. यानी स्टेट के जो फंक्शंस होंगे वो तीन तरह के होंगे. One would be performed by legislature, other would be performed by executive and other would be performed by judiciary. But सवाल ये है कि whatever the function they are going to perform, let's say F1, F2, F3, that would be on the basis of what? उसके लिए स्टेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. That's how some political science gave the definition of state. Now, component of the state and the meaning of state is different. These are the components or elements of the state, but definition of the state is, political scientist ने कहा, कोई भी territory or piece of land can be termed as state, city state or any state only if they have these four components. कब हम उनको स्टेट कहेंगे? जब ये चार कंपोनेंट उनके पास होंगे. कौन से चार कंपोनेंट? पहला, they must have government. दूसरा, they must have people, population. तीसरा, they must have territory. And चौथा, they must have sovereignty. ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका? स्टेट का. ये मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया. दिस इज गिवन बाय व्हाट? द वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट. उन्होंने दिया हुआ है. तो जो मेरा पॉइंट था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज नथिंग बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ द गवर्नमेंट एज एन एंटिटी came into existence. Basically the government as an entity came into existence. As per the definition, it is one of the most important part of state. अब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट क्या है, क्या है नहीं, कैसे आया. क्या है तो वो तो अभी मैं बताऊंगा. बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वाज कार्व्ड आउट ऑफ स्टेट? बेसिकली गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज नथिंग बट दैट एंटिटी which is going to respect the provisions of social contract theory. Social contract theory में जो बात लिखी है ना, क्या बात लिखी है? One class will enjoy power and authority, second, rights and rights, who will liberty, give, who will protect, who will manage the rights and duties of the people? The government. And for that, what government needs? The government needs power. So that power is given to the government by whom? By the state. How the state has got the power? Because of social contract theory. And what is a contract? Constitution. कुछ हवा लग रही है? yes sir, Yes, sir. Let's try to understand it chronologically. So basically when we talk about it, then what? सबसे पहले क्या आया? नेचर ऑफ स्टेट. ये बात क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. yes sir, नेचर ऑफ स्टेट में क्या शुरू हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, है ना? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या करना पड़ा?
कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया? 2 classes would be there. One would be what? Ruling class, other would be ruled class, है ना? ये जो रूलिंग क्लास है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में इसी को आज हम क्या कहते हैं? यस, बट जब रूलिंग क्लास बनी तो सिंस इट वाज अ पार्ट ऑफ स्टेट दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज स्टेट, और स्टेट को जो पावर्स मिल रही हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिल रही है। पावर किस लिए मिली है? ताकि इन लोगों के जो राइट्स हैं, रूल क्लास के जो राइट्स हैं, दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अदरवाइज इफ देयर इज नो पावर तो ये फिर क्या हो जाएगा? लेसेस फेयर हो जाएगा, लॉलेस लैंड हो जाएगा, लोग एक दूसरे को फिर मारने लगेंगे। ऐसा ना करें, इसलिए स्टेट बीच में आएगा। तो क्रोनोलॉजिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देन ऑल द पावर वाज गिवन टू द स्टेट। किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं आज के टर्म में? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सारा पावर किसको देता है? स्टेट को। और स्टेट क्या करती है? वो सारा पावर किसको देती है? यस, गवर्नमेंट। वो पावर खुद एक्सरसाइज नहीं करती। इसीलिए द गवर्नमेंट इज द एंटिटी विच एक्चुअली एंजॉयज द पावर गिवन बाय व्हाट? द स्टेट। तो इस तरह से कुछ सीक्वेंस चलता है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. And what is the objective of state? Objective of state is to use that power for protecting what? The rights of rule People. class, people, citizen. यही है ना ऑब्जेक्टिव स्टेट का। लेकिन स्टेट का ये वाला ऑब्जेक्टिव पूरा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? Power. Powers. इसलिए हमें स्टेट पावरफुल नहीं लगता। As a people, we never realize that India as a state is powerful. Rather, what we believe, government powerful है। Government is. भाई मोदी हैं तो मुमकिन है ना? तो पावर किसके पास दिख रहा है हमें? भारत सरकार के पास दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी के पास दिख रहा है। हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली ये पावर इनकी नहीं है। दे आर एंजॉयिंग द डिराइव्ड पावर। एक्चुअल पावर किसकी है? स्टेट की। तो इट इज अ स्टेट विच इज ऑल पावरफुल, बट स्टेट क्या है? लेजी इंसान है, आलसी आदमी, कुछ नहीं करता है। तो सारा पावर हम्म वो सारा पावर किसको दे देता है? गवर्नमेंट को। इसलिए हमारे लिए ज्यादा पावरफुल एंटिटी क्या हो जाती है? Government. गवर्नमेंट। अब सवाल ये है, गवर्नमेंट क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट मतलब पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस। पूरा जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है उसको अरेंज करने का, मैनेज करने का, स्ट्रक्चर डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? यस, Government. द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यही सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती। So suppose I am a student of political science, not the student of public administration. Then what I'll study? As a political science student, I'll study the first thing what? About the state. And there are many theories related with the state. तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Second what I'll study? I'll study about the government. और गवर्नमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? The first thing we study about the government is nothing but what? What is the composition of government? होता क्या है? What are the powers and functions of the government? Right? What is the objective or aim or goal of the government? यही सब पढ़ेंगे ना हम? Yes or no? So, as a political science scholar or student, I'll be studying about state, I'll be studying about government, its composition, powers and functions and objectives. Then the big question is, where is our public administration? ये कहाँ है? इसको समझने की कोशिश। So when we talk about where is our public administration or how we'll get public administration for political science, so as I said, the political science is something which will focus upon state. After state, it will focus upon the government. But what is a state? So state is nothing but it has certain elements, and which I have told you are what? Basically three: legislature,
जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये 3 पार्ट है. Now when we talk about legislature, legislature means parliament also. What is the job given to legislature? The legislature takes the job of law making. They makes the law. How, why, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. Executive. What is the responsibility of executive? It take care of law implementation. Whatever the laws made by legislature, that would be implemented by executive. And judiciary is there for checking whether the law is correct or not, appropriate or not. That is nothing but interpretation. So these are the power. अब ये पावर किसने दी है? इन तीनों को ये पावर किसने दी है? Obviously, who had given the power? State. और स्टेट को पावर किसने दी है? तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, let's say for example we are saying legislature. So legislature will make the law. But the big question is, who all would be there in the legislature? कौन होगा legislature में? That means, who are the people who will be part of legislature? How these people would be appointed? How these people would be removed? What kind of job, that is power and function, they will be performing? ये सभी तो पता होना चाहिए. Yes or no? Yes, sir. Similarly, who are executive? भाई हम legislature मतलब इसे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इन सब में कौन होगा? कैसे वो आएंगे? इलेक्शन से आएंगे, सिलेक्शन से आएंगे, क्या करेंगे, कितनी पावर होगी, कैसे उनको हटाया जाएगा? कहीं ना कहीं तो पता होना चाहिए ना, लिखा होना चाहिए. उसी तरह एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? तो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Again the same thing, how they are going to be appointed, removed, and what are the powers and functions. And the same thing goes for judiciary also. That is what? Appointment, removal, and powers and functions. So idea here is what? Idea here is, इन सब की study जो हम करते हैं collectively, that study is done under the discipline called what? Political science. अब समझ में आ रहा है? Yes? Yes, sir. थोड़ा बहुत. So political science is what? It's nothing but study about various elements or components of the state. ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? टोटल 4 ही है. गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गवर्नमेंट. हम आगे के कंपोनेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अभी हमारी जरूरत नहीं है वो. हमें सिर्फ ये समझना है ये SIR से प्रोवाइड कैसे आ रहा है. तो पॉइंट हियर इज, वो किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में. और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो कई तरह की होती है वो. जैसे यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल पे है. और इन सब में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब होंगी. इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो सवाल ये है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? राइट. और इसका आंसर ढूंढने में लगभग 2000 साल लग गए. 2000 years. क्योंकि अब हम BC से AD में एंटर कर रहे हैं. और क्लास के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था that 1887 was considered to be birth year of public administration. यानी 1800 साल तो ऐसे लग गए ना. और छोटी सी बात समझ लें. वो छोटी सी बात क्या थी? आपको भी थोड़ा सा अमेज लगेगा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन 2000 साल की मेहनत के बाद क्या समझ में आया? That political science, which is a mother discipline, which take care of all the studies Sir, related. screen share हो रही. अच्छा, I'm so sorry. मैं भी जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा, थोड़ा सा नया है मेरे लिए. तो I'm so sorry for the glitches. So when we talk about political science, then here it will tell us about the, no doubt about state, no doubt about the government. It will also make us study about the population and territory. That's the other thing, right? But here when we talk about these two entities, in this we know that since there are 3 components, legislature, judiciary and executive, इतना नैरो अप्रोच है ये. बाद में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा when we study the narrow and wider approach.
that people have said that this executive part, right, is nothing but public administration. और ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस है. Only this part, so called executive, is part of public administration. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट दो काम करती है. व्हाट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट? Policy making and policy making implementation. and policy what? Implementation. यही ना? Yes or no? And making the policies and implementing the policy is what? Domain of political science, right? But in that, this implementation part is considered to be domain of what? Administration. तो ये शुरू से था, डे वन से था. जब से गवर्नमेंट बनी होगी तब से पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कर रही होगी. लेकिन एक बंदा आता है जिसका नाम है वुड्रो विल्सन और वो कहता है कि नहीं, ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, राइट? क्लर्क का जॉब नहीं है ये, और उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और उसी को उसने कॉइन किया क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. So basically public administration is what? It's nothing but executive side of political science. When we say executive side, simply means what? Implementation aspect of political science. या फिर Woodrow Wilson, who is considered to be the father of public administration, what he says? Public administration is nothing but government in action. तो जब गवर्नमेंट एक्शन में है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. या फिर he says it is the most visible side of the government. So what is the most visible side? The implementation part. समझ पा रहे हैं आप? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें किस तरह से चीजें शुरू हुई, तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली निकोलस हेनरी एक बहुत बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर रहे हैं. वो इस चीज को डिवाइड करते हैं लोकस और फोकस के टर्म में. तो जब आगे पढ़ेंगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा. जब हम पैराडाइम्स की बात करेंगे इवोल्यूशन में, देन ही एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन लोकस एंड फोकस. तो लोकस एंड फोकस मतलब अगर आप टर्म समझते हो तो एक लोकस जो उसका लोकेशन हो गया, सेंटर कहाँ पे, और फोकस कितना एरिया वो कवर कर रहा है. तो लोकस की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोकस क्या है? एग्जीक्यूटिव है, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वो एग्जिस्ट करता है. बट फोकस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन तो यार पार्लियामेंट में भी होता ही होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो जुडिशरी में भी होता ही होगा, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के तो कुछ चल नहीं पाएगा, राइट? तो उस टर्म में जब बात करेंगे तो उसका वाइडर कैनोटेशन भी देखेंगे. फिर इसमें नैरोवर व्यू पढ़ेंगे, राइट, वाइडर व्यू पढ़ेंगे, इंटीग्रल व्यू पढ़ेंगे, मैनेजरियल व्यू पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे. बट पॉइंट इज पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये शुरुआत हुई कहाँ से. तो हमारा जो कोर है स्टेट में और गवर्नमेंट में, वो सिर्फ एक एंगल पे फोकस रहेगा, और वो है एग्जीक्यूटिव को समझना. अगर एग्जीक्यूटिव हमें समझ में आता है, देन वी कैन से वी अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ, लेकिन बिना लेजिस्लेचर और जुडिशरी को जाने एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से वैसे भी समझ में नहीं आए. तो उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन दैट पार्ट इज नॉट अ कोर एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. दैट पार्ट इज अ कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, आउट ऑफ विच द कोर एरिया फॉर अस इज टू फोकस अपॉन एग्जीक्यूटिव. पूरा पेपर 2 जब हम उठा के देखेंगे, हर टॉपिक के आगे एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा. यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस. बट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही आ जाएगा, हम क्या पढ़ेंगे उसमें? विल स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इज दैट क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Okay. इसके बाद आता है कि अगर ये सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, तो फिर कैसा सब्जेक्ट है, क्या नेचर है इसका? वेदर वी कॉल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है ना, साइंस का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? इफ वी हैव टू पुट दिस डिसिप्लिन, क्योंकि पबैड पैदा होने वाला है, इट इज अबाउट टू बॉर्न, और 1887 में जब ये पैदा हुआ तो इसको अपनी एक आइडेंटिटी तो चाहिए. लोग पहचानेंगे कैसे? क्या हुआ, मूर्छित हो, मर गए, नालायक हो, सांस नहीं चल रही है, अच्छा थक गए हो सुनते सुनते? No, No, sir. sir. आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, इस बात से नाराज हुए? No, sir. नहीं, sir.
ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। यस, खुश नहीं होना उमर, यहीं रहो, कहीं जाना नहीं। ब्रेक का मतलब अभी समझाते हैं क्या होता है। तो ब्रेक का मतलब ये है कि कल जो आपको असाइनमेंट दिया था, अब उस पर कुछ सवाल जवाब किया जाए, है ना? थोड़ा सा चेंज होगा ना एटमॉस्फेयर। हम्म। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करने वाले थे? आशुतोष से, आई गेस। यस अल्फाबेटिकली सर। तुम्हारा नाम पहले आता है। हाँ। हाँ सर। तुम्हारा टॉपिक क्या था? फर्स्ट चैप्टर यस सर। और फर्स्ट चैप्टर था सर, और 10th चैप्टर था पेपर 1। 3 था तुम्हारा, मुझे याद है। हाँ सर, सेकंड सेकंड पेपर से सर 6th चैप्टर था। हाँ, बोलो पहले चैप्टर का सिलेबस बताओ जल्दी से, बिना देखे हुए। सर इंट्रोडक्शन पार्ट है सर पहले चैप्टर में, उसमें सब टॉपिक्स हैं सर। मीनिंग, स्कोप एंड हम्म। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही बोल रहा है कि नहीं? और सर सेकंड आता है विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, evolution of the discipline and its current status सर। और सर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हम्म, नेक्स्ट सर आ जाता है पब्लिक चॉइस थ्योरी। और सर इसमें है challenges of LPG सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और सर गुड गवर्नेंस सर, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। और लास्ट सर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। गुड, ठीक है। 10 चैप्टर बताओ, पब्लिक पॉलिसी। टेंथ सर, सर पब्लिक पॉलिसी सर। सर इसमें आता है सब टॉपिक्स है मॉडल्स ऑफ सर। लगा ही था बेटा मुझे, आ रहा तुम्हें एक सर ही याद किया होगा ये सोच के कि पूछेंगे कहाँ। पॉलिसी मेकिंग एंड सर इट्स क्रिटिक्स। और सर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सर, इट्स एंड इट्स इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, प्लानिंग सर आ जाता है इसमें। और कहाँ देख रहे हो बेटा? देखना है सामने हाँ, है सर। और सर इसमें ठीक है। जब हमारे असाइनमेंट कोई फॉलो लिमिटेशंस नहीं वगैरह। करता है या जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए हम एक डेमोक्रेटिक पनिशमेंट रखते हैं, जो मैं आपको कल नहीं बताया था। ठीक है, वो ये कि जो टॉपिक आप नहीं बता पा रहे हैं उसको 5 बार लिख के शाम तक आप सबमिट करेंगे ना, और कल फिर पूछूंगा आपसे। तो पहला ठीक है चैप्टर सर। तो तुमने सही से बता दिया। अब तुम्हें 10th और 6th चैप्टर है ना, ये दोनों का कितनी बार? हाँ सर, 5 बार सर। 5 बार। और कल भी नहीं बताया तो फिर 10 बार, वो बढ़ते जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा, है ना? ठीक ठीक है, है सर। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट, अभी अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मेरा पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5th था, हम्म। एंड दैट इज बेसिकली आई टॉकिंग कॉन्टैक्ट अबाउट। स्वीटहार्ट, इधर इधर देखो आंख में, हाँ। ओके, ओके, ओके। यूनिट 5th था, एंड दैट इज बेसिकली एट administrative accountability and control, हम्म। and the sub unit is basically starts from uh, uh, the concept of accountability and इसका controls, तो कोई and टॉपिक ही नहीं है। uh, याद है कि नहीं? सही से बताओ। हाँ सर, मतलब फिर इधर याद उधर है। देख रहा नालायक। सर पार्ट पेपर फर्स्ट का यूनिट 5th था, दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल करके। तो बताओ उसका टॉपिक बताओ, 1 2 3 4 फास्ट हाँ, एकदम। the first is basically uh, the concept of the accountability and control. Second is legislation, executive and judicial control over administration. Third हम्म। is the third is the citizen and administration. Fourth is इंटरफेस, the एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, हाँ आगे। the role of media, and इसके बाद एंड मतलब क्या, सिविल interest of सोसाइटी एनजीओ नहीं लिखा उसमें? no sir, no sir, no sir। कहाँ सिलेबस डाउनलोड किया है? सर जो ग्रुप पे आया था उसी से किया था मैंने। ठीक ठीक, आगे चलो, एक बताओ। बार क्रॉस चेक नहीं आप नहीं, कर लो। बाद में लो, अभी तुम बताओ। हाँ, अभी क्रॉस चेक करने ओके, चक्कर में देख लो। interest group, and then voluntary organization, civil society, citizen charter, and right to information, and social order. That is basically talks about the 50th unit of paper first.
ठीक, परफेक्ट, गुड। Okay. अगला चैप्टर ओके क्या? And पेपर सेकंड का मेरे पास सेकंड यूनिट था, दैट इज बेसिकली philosophical and the constitutional framework of government. That is basically our unit second. And the first is basically talk about the salient features and the value premises. The second topic is the constitutionalism, and the third is the political culture, and the fourth is bureaucracy and democracy, and the fifth is bureaucracy and development. गुड वन, And ठीक and है, प्रथम। Yes, sir. Sir, I have chapter 3 from paper 1, that is administrative behavior. Sir, उसके topics थे process and techniques of decision making and communication, morale, motivation theory content, process and contemporary, and theories of leadership, traditional and modern. And sir, chapter 12 financial administration में sir सब topics थे monetary and fiscal policies, public borrowings and public debt, and budget types and forms, budgetary process, and financial accountability, and accounts and audit. And sir, chapter 8 पेपर 2 का सिविल सर्विसेज था, उसमें टॉपिक थे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, स्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, and good governance, capacity building, code of conduct and discipline, and um, and political rights, and grievances redressal mechanism, civil services neutrality, and civil services activism. एनोमेट्री, हाँ सर। ठीक है, गुड वन, परफेक्ट। जो लोग बता चुके हैं ना, जैसे पांडे जी अभी, हाँ 150 पॉइंट्स रिवाइज करते रहो, अभी उस पर पूछूंगा, ठीक है? बैठो मत, आराम से, फिर नंबर आएगा। यस डायना। So paper 1 chapter 4, paper 2 chapter 1 and 3. Paper 1 chapter 4 was organization, organization theories, system theories, contingency, its scope and structure and scope. इसके बाद मार समझती हो? मार नहीं सर, मुझे याद है सर, मैं रट्टा क्यों आप कल बोले थे ना, रट्टा क्यों, तो थोड़ा दिक्कत होती रहता है इसमें। जॉइन हैंड्स विद आशुतोष पांडे जी, राइट 5 टाइम्स, है ना? सबमिट इट टुमारो, ठीक है? चलो आशुतोष तुमको पेपर 2, हाँ बोलो सर पेपर 2 चैप्टर 1। क्या पेपर 2 चैप्टर? सर पेपर 2 का चैप्टर 1 मिला था, वो याद है पूरा? ठीक है, बताओ। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कहाँ दिया है उसने? एडमिनिस्ट्रेशन है? नहीं, हाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बात नहीं, 5 बार लिखोगे, 5 साल के लिए याद है। कल लिखो और अभी 150 पॉइंट्स रिवाइज करो। बाकी गधे सब लोग कहाँ हैं जो कैमरे पे नहीं है? उमर, आई थिंक यू आर नॉट देयर यस्टरडे इन द क्लास ना? No, sir. Sir, I purchased later in the exam. Okay. Manju, how are you? Am I audible, Manju? आवाज आ रही है मंजू? You're on the name of Manju Rathi, or like your original name on this thing is also Manju? Unmute करो, unmute, आवाज नहीं आ रही है। नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट? एक बार लॉग आउट करके फिर ज्वाइन कर लो, मुझे लग रहा है तब शायद वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। I think Umar was not there. Who else was there? बाकी किसी का कैमरा चल नहीं रहा। देखो छुप के बैठे नालायक, बता भी नहीं रहे कि मैं था नहीं था, है ना? अच्छा, स्नेहा was there, right? Yes, sir. हाँ स्नेहा, if you are in office you can. No, I'm at home, sir. No problem. Okay, go ahead.
Sir, so I got topics. Paper one में मेरा Sir, chapter actually, I was in library. अच्छा, you're in library. Okay. Just give me 2 minutes, Manju. I'll get back to, है ना? थोड़ी देर बाहर रुको. Yes, Neha. चैप्टर 6 था मेरा पेपर 1 से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था. तो उसमें मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद डाइसी Yes, sir. डाइसी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर Okay, sir. Okay. delegated legislature, उसके बाद administrative tribunals. These were the 4 subtopics administrative law के अंदर. और paper 2 में I got chapter 6 public sector undertakings. So in that, forms of public sector undertakings, public sector undertakings in modern times. उसके बाद impact of privatization, globalization, Liberalization. liberalization. उसके बाद problems of accountability, control. Accountability, control. इतना ही याद है sir. I think one more word was there. ठीक है. Yeah. Well, your video is not visible actually, so I think. My video is on, sir. अच्छा, okay. Now it's visible. I think. Okay. When you were speaking, actually, it was not. ठीक है, perfect. Well done. Great. Anybody else is left? I think we have done with it. ठीक है. So Manju, how the things are going on? Library में हो? I think she's still in the library. Actually, she was old student, so very intelligent also. So I was very happy to see her, in this class. आप लोग वो लेकर आए हैं assignment? Yes, sir. I'm in library. Still in How are library. you? I'm good. After the class, do call me, है ना? You can just show the thumbs up. That's it. ठीक है. So, take out that assignment page which I told you Good yesterday. to see you, sir. Very soon. You are in Delhi or somewhere else? Yeah, sure. Okay. Actually, I also needed this batch and your guidance also. Most welcome, Manju. And shortly after the class, I'll ring you up or just drop me a text on WhatsApp, है ना? ठीक है. No, sir. I'm at my home. अच्छा. So just call me up after the class. We'll discuss. Okay. I think some connectivity issue. ठीक है. All others. Sure, sir. Okay. All others, take out the assignment page and show it to me. Perfect. Pratham. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Sneha. It's not assignment page, I guess. हाँ सर, कल बोले थे ना सर. आज हो जाएगा. हाँ, आज तक I've ordered sir. I'll get it back. अच्छा, ठीक है. Diana. Good. Umar, do you have the page or no? Unmute करो बेटा, unmute. Sir, I have just written the paper one syllabus, sir. नहीं, assignment page है तुम्हारे पास? Blank page? I have this spiral at the library, sir. Okay. ठीक है, perfect. Anybody else? I think no. Actually, आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो it would be more convenient for us. But no problem, ठीक है. विकास जी, हाँ है assignment page. अनम्यूट करो विकास, आवाज नहीं आ रही. आप लोगों को अनम्यूट वगैरह करने में दिक्कत हो रही है या कुछ ग्लिच आ रहा है? Sorry, good morning, sir. Good morning, Vikas. Sir, actually, I was your earlier student and I again took your class. Due to some reasons, like I didn't completed your class properly. Just No make issue. all of the notes and
if it didn't revise, so that I get lots of trouble in your subject, and that's why I want again. Okay, no So, issues, no issues, no issues. Abhi, you have the assignment page? sir, actually, I today joined only. Acha, today only you joined. Okay, okay, no issues. So all of you have completed 150 points. Anybody who has not? Sir, me. Who has not completed? Sir, me. Pandey. Yes, sir. How many times you have to write this 150 points now? Sir, Uh, 5, right? It will go on increasing if you don't complete it. सर ठीक है. 5 ज्यादा हो जाएगा सर. अभी तो और ज्यादा होगा नालायक, वो फिर 10 15 ऐसे जाएगा. But make sure pending में ना जाए, है ना? Today will not ask you to write, but Yes, sir. tomorrow onwards make sure it is completed, है ना? Sir, Yes, sir. sorry, sir. I have one question. Should I again make the notes, or we should continue through the earlier notes? नालायक, बस नोट्स कलेक्टर बनो, गधा कहीं का. एक बार नोट्स बना के अभी काम नहीं चला है. फोकस शुड बी. अभी यहाँ पे सी प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, कि उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हम खुलकर नहीं कर पा रहे थे. वी आर नॉट ओपन फॉर मेनी थिंग्स, राइट? बट हियर वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, क्योंकि मुझे अब कोई रोकने वाला नहीं है ना. तो अब जैसे यू आर ऑलरेडी ए स्टूडेंट, यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑल्सो. हम किस मोड में जा रहे हैं, है ना? किस Yes, तरह sir. से हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे, इट वुड बी मच मोर बेटर, है ना? तो नोट्स की टेंशन मत लो. ये जो मैं लिखता हूँ, अगर वो लिखना है आपको, जॉट डाउन करना है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो. इसका पीडीएफ बन जाता है, तो आई कैन शेयर द पीडीएफ ऑन द ग्रुप. Okay, sir. विल दैट बी ओके? Okay, thank you, sir. इन चीजों पे फोकस करो विकास, दैट यू नो रिमेंबर द थिंग्स, आंसर इन द क्लास, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी फोकस, राइट? Okay, sir. Okay. Now take out a blank page. Everyone take out a blank page. That assignment page, one sheet, tear it out. We'll do it live, right? Have you got it? On the right hand Yes, side sir. top corner. On the right hand side top corner, write today's date. In the center, top center, write down summary number 1. Summary number 1. And on the left side top corner, write your name. Done? Yes? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Write down question. Discuss about evolutionary perspective. Discuss about evolutionary perspective. Discuss about evolutionary perspective of public administration as a discipline. Discuss about evolutionary perspective of public administration as a discipline. Discuss about the evolutionary perspective of public administration as a discipline. Put this whole statement in double inverted comma. At the end, make a bracket, write down 150 words. Done? Now look here on the screen. Here what you have done, let's say for example, this is your answer sheet. है ना? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो don't mind for it. And this is, suppose the margin is there. Right. This is the margin for that. Here you might have wrote the question X, Y, Z.
and here you wrote 150 words. Okay. From here, you start writing the answer. But before that, what you have to do, all of you, you know, you have to actually, you have to, old student might be knowing, new students, what you have to do is you have to take the space of this four fingers, right, from a lower second margin. Let me show you. This four fingers, right, not the thumb, this four fingers collectively, and then go back to the page, that is assignment page, and here you see from what you have to make a line. Let's say this is the second lower margin, this is the lowest margin. So from here you have to put the four fingers, and here you have to draw a line. Okay, do that everyone. इसको करो. जस्ट चार उंगली रखना है, एक लाइन बनानी है और कुछ नहीं. हो गया. इसमें करना क्या है, जब हम 150 वर्ड का आंसर लिखते हैं तो वी नीड एटलीस्ट 5 to 8 पॉइंट्स टू राइट इन द आंसर, राइट. आपको वो 5 से 8 पॉइंट जो है इस वाले स्पेस में लिखना है. पॉइंट का मतलब 1 or 2 words, not more than that. So here what you have to do, right, and that here you have to write those 5 points at least. वैसे 8 पॉइंट लिख सकते हैं, बट 5 पॉइंट्स कम से कम लिखिए, एंड पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन a word or two. For example, let's say the first point you might be writing about introduction. So first could be introduction. Second point, you might be writing about origin of universe. Third point, you might be discussing about philosophical origin, right? Fourth point, let's say what we have discussed, you might be writing something about Socrates, Plato, Aristotle, and so on. Fifth point, you might be talking about origin of state or nature of state, like that. 1 or 2 word, not more than that. Try to write these 5 points in this. Start doing. Whatever we discussed in the today's class, based upon that, whatever 5 points you want to mention in the answer, write them in the lower margin. Done? नालायकों, 7 मिनट में पूरा आंसर लिखना है, 1 घंटा थोड़ी लिखने के लिए. जल्दी लिखो. लिख लिया? Yes or no? Yes, sir. प्रथम, पांचों पॉइंट पढ़ो जो लिखा है, जल्दी. सर इंट्रो एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सिटी नालायक, स्टेट. जो मैंने लिखा है वही लिखा है तूने, गधा कहीं का. शुरुआत में दो तो वही लिखेंगे. ठीक है, बाकी बता. उसके बाद सिटी स्टेट, देन पॉलिटी, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पंडित जी फास्ट. Sir, part of political science as mother discipline. इतना बड़ा कैसे आ गया तुम्हारा पॉइंट उसमें? Political science as mother discipline, बस इतना है. First point sir, और origin of universe as initial stage sir, और philosophical perspective सर, इसके आगे नहीं लिख पाया सर. ठीक है, कोई बात. अभी फास्ट, गुड वन पांडे जी. Introduction, pre-Socrates, social contract, state government. वेरी गुड. विकास. So, origin of universe, it begins from origin of public administration. It begins from 1887. States formation, social contract theory. Okay. Umar, good one विकास. Umar. So introduction, origin of universe, planet, nature of state. तो इसमें लिखा है. Perfect, perfect. Good one. Sneha.
Yes, sir. पहला intro multidisciplinary subject फिर myths origin, Socrates logic, city state, social contract. Good one. Manju. I think at the end of Manju we are getting some connectivity issue. ठीक है, Dinah. Sir, introduction, origin of universe and its theories, city-state, conflicts within the city-state, Socrates, Aristotle and their theories, social contract, state and government and their powers, ruling class and ruled class, and manage the distribution. That is the public administration. Good one. Well done. Perfect, Dinah. Very good. Great. Now you have got at least 5 points, everyone. Now, let's go back again to the screen. And here, what you have to remember is that you have to write 150 plus words. How many? 150 plus words in your answer. Your answer will be, you will be writing here in paragraph or point form. ये space खत्म हो जाएगा तो अगले पेज पे लिख लेना. Total number should be 150 plus words. कम से कम इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं. And for doing this, you will get 7 minutes and 20 seconds. ये इतना specific time क्यों है, ये सब मैं जब answer writing पे class लूँगा तब बताऊँगा. But 150 words you have to write at least. More than that will do, but less than that नहीं होना चाहिए. 7 minutes and 20 seconds में ये खत्म करना है. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Your 7 minutes and 20 seconds starts now. It's 11:13. So 11:20 पे खत्म करना है. Start. And okay, just give me a minute. Those who are not on camera, we are not able to see their answers or no things. So I would request, we'll be able to talk to only those people who are on camera, right? So please make sure you put on your camera if you're attending live classes, right? From the next class onwards. But always be in camera. I want to see you how you are writing. Okay? So go ahead. 11:14 you take. So from that 7 minutes, that means 11:21 you finish. Start. प्रशांत इधर उधर मत देख, आंसर लिख नालायक.
Last 1 minute. All right, stop it now, everyone. ठीक है. कंप्लीट हो गया. No, sir. कंप्लीट नहीं हुआ. No, sir. No. सर एक दो लाइन में रह गया. कोई बात नहीं. Count the total number of words which you have written in the answer. Manually count करो 1 2 3. प्रथम अनम्यूट करो, आवाज आ रही है. Sir, 60. 98. ठीक. 98. अब जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, उसको लास्ट में जहां पे आंसर खत्म हुआ है, जैसे यहाँ पे आंसर फिनिश हुआ है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के टोटल लिखो कितने वर्ड्स लिखे हैं. 100 120 30 40 190 whatever. ओके. 95 वर्ड्स मंजू. ठीक है. उमर 95. 95. अभी 60, sir. प्रथम 88, sir. 88. डायना अनम्यूट करो. 150 अराउंड. अराउंड क्या होता है? नालायक. काउंट मतलब करके 140 तक काउंट की हूँ, बाकी थोड़ा रह गया. करो काउंट करके बताओ. स्नेहा 132, sir. 132. विकास सर काउंट कर रहा है. अच्छा. आशुतोष 52. 52. मंजू 95 आई गेस राइट. सर हाँ डायना 162. गुड. सर पर मुझे लग रहा है मैं इफेक्टिवली नहीं लिखी, मेन पॉइंट्स रह गया. कोई बात नहीं. अभी फिलहाल हमारा कंसर्न वर्ड लिमिट है और कुछ नहीं. कंटेंट पे अभी हमें नहीं देखना है. कंटेंट विल स्टार्ट लुकिंग इन आफ्टर सम क्लासेस. नाउ आवर कंसर्न इज टू राइट 150 वर्ड्स इन 7 minutes. दैट्स इट. सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 150 वर्ड लिखना है. सो दोज हु रोट 150 वर्ड्स व्हाट दे विल डू. यस डायना यू विल पोस्ट योर असाइनमेंट ऑन द ग्रुप इमीडिएटली. एक फोटो लेके असाइनमेंट ग्रुप पे डाल देना. अदर ओके पीपल सर. other people well attempted. ठीक है. Don't be sad about it, but give yourself marks. 0 out of 10 marks. This was a 10 mark question, so write 0 out of 10. And here why 0 because if you don't match the word limit, answers are not going to be evaluated, right? It doesn't mean you have not written anything. You might have wrote anything, but the thing is that's of no use, right? You have to write in the word limit. That's the first thing we need to have it. So after 10-15 answer, it will come by default. Don't worry. Good thing you wrote some word, but again, we'll be able to submit only the Dyna's assignment. Those who write in the word limit,
they will submit. Other people re-attempt it after the class. Once again, read it or and try to write it. But time limit should not be violated. It has to be within 7 minutes. Yes, Pratham. सर एक्चुअली ना सर ये जो आंसर है इसमें लिखते लिखते सर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिखने लग गया मैं। कोई बात तो नहीं। समझ में नहीं आया क्या लिख रहे थे सर वो फिर वहां से इंडस वाली सिविलाइजेशन से लिखते हुए कि सबसे पहले वो ह्यूमन इवॉल्व हुए फिर उसके बाद वो ट्राइब्स में रहने लगे फिर नो, वहां पे वैसे तुमने क्या लिखा है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, कितना लिखा है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम वर्ड लिमिट में पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर विद इन टाइम हम पूरा वर्ड्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आई विल मेक यू लर्न हाउ टू राइट द गुड पॉइंट्स एंड जनरेट द आंसर, है ना। जैसे हम पैराग्राफ में लिखे हैं, पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं, हम सब सीखेंगे। दिस इज ऑप्शनल क्लास ना, हमारे पास टाइम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, विल लर्न एवरीथिंग। ओनली थिंग इज पहली प्रायोरिटी समझने की कोशिश करो, सारी लाइन स्ट्रेट हो, मार्जिन के बाहर कुछ भी ना जा रहा हो, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग वन, जितना वर्ड दिया गया है 200 वर्ड लिखना है तो 200 प्लस लिखो, उससे कम मत लिखो। ये टारगेट पहले रखो, ठीक है। यस यस सर। सर मैं पीडीएफ फॉर्म में डालूं या फोटो में? मैं फोटो डाल दी। कोई बात नहीं, जस्ट वी नीड टू सी दैट। वो इवेलुएट नहीं करना, देखना है मतलब क्या लिखा है आपने, और कुछ सीधे फोटो लेके आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ओपन अप द प्रसाद एंड प्रसाद एवरीवन। मिल गई बुक? नहीं नहीं मिली सर। पीडीएफ भेजी तो थी ग्रुप में। हाँ सर, पीडीएफ है। बोटी बोटी होगी तुम्हारी पांडे, ठीक है। सो आई होप एवरीवन गॉट द पीडीएफ। पहला चैप्टर पढ़ लिया आपने? यस सर। हैव यू रोट द पॉइंट्स? यस सर। सबने 150? यस सर। एनीवन हु हैज नॉट डन? सर अभी मेरा नहीं हुआ है पॉइंट्स। उमर ऑल्सो, अभी ऑल्सो, ठीक है। ओके, व्हाट इज द सेकंड चैप्टर? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। Administrative theory, ठीक है। So today's assignment is to read the administrative theory and write 250 points, 250. जिनका नहीं हुआ है 150 कल वाला और आज का 250, और जिनका हो गया they will be writing 250 points today and submit it. Yes Manju, tell me. Manju, you raise your hand, you want to speak, say something? No, okay, ठीक है। Have you got the assignment? What do you have to do? And how many questions you made today? On 150 points, how many questions were supposed to be made? 5 questions. 5 questions. Have you completed that? No. Not yet? No problem. So for the first and today's assignment, again 5 questions, so you have to submit 10 questions and 250 points, right? Okay, Manju saying मेरे points रहते हैं, ठीक है Manju, just complete it since you have joined today only. So you can start from today. Start with the second chapter, that is 250 points, right? सर जो फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट्स बना के भेजे थे वैसे ही बनाने हैं, आपने देखे थे? जैसे पहले वाले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाने, सही है। ठीक है। I think Pratham was the first one to submit also, so you know, go ahead with that same flow, nothing to worry about, है ना? Okay. Any confusion, anyone? So I hope you are able to understand the class, right? And only thing is you have to be on toes. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो streamline हो जाएगा। तो that's all we have for the today's session, and we'll connect with you tomorrow. The link for the same will be shared, and what we'll do is maybe in a day or two we'll get the
technical part done on the app and all those things. So this would be available there also, and this would be live here also. So it would be in a recorded format also, which will be accessible to the students who are not able to attend the offline class, right? तो आप वहां से भी डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ सकते हैं. Clear? Okay. Sanjay. अच्छा, Sanjay is saying, let me check this. I also joined today, so can I start from second chapter of Prasad and Prasad? Yes, Sanjay, go ahead with the second chapter. No, those who have joined today they can go ahead with the second chapter. Okay? Manju, Sanjay, all these people. I think Umar also had joined today only, so Umar can also start from second topic, right? So thanks a million once again for being here. Sir, Yeah. sir, क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाएगा वो तो पता ही नहीं था. जो आप क्वेश्चन आपने दिया था अभी लिखने के लिए, सर उसका आंसर लिखा कैसे जाएगा वो अभी जैसे मैंने बताया था ना, पढ़ाया था, एकदम सेम सीक्वेंस फॉलो करना है. इसका मैं एक बार राहुल, ऋषभ और अनिकेत से बात करके ना पीडीएफ एक बार ग्रुप में डलवाता हूँ, तो एक बार चेक कर लेना, उसी हिसाब से पॉइंटर्स है ना, या नोट डाउन किए होंगे तो उसी फ्लो में चलना है. बट दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन आइडियली, राइट? ये तो बस ये था कि जो तुमने आज पढ़ा उसमें कितना तुमको ध्यान आ रहा है, बस इतना चेक करना. So whatever you read today, studied today, whether you are able to put it back on paper or not, that was the concern. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Perfect. So take care, have your breakfast and all those things, and study well. Bye bye. Have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.